आइटम नंबर 1 श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, आप बैठ जाए माननीय सदस्य, प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज। धन्यवाद जी। ऑनरेबल आपको बोलने का मौका दूंगा बजट के बाद, माननीय वित्त मंत्री जी। ऑनरेबल स्पीकर, I present the budget for the year 2021-2022. As introduction, Honorable Speaker, the preparation of this budget was undertaken in circumstances like never before. We knew of calamities that have affected a country or a region within a country. But what we have endured with COVID-19 through 2020 is sui generis. When I presented the budget 2020-2021, we could not have imagined that the global economy, already in throes of a slowdown, would be pushed into an unprecedented contraction. We could not have also imagined then that our people, as those in other countries, would have to endure the loss of near and dear ones and suffer hardships brought about due to a health crisis. The risk of not having a lockdown was far too high. Within 48 hours of declaring a 3-week-long complete lockdown, the Prime Minister announced the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, valued at 2.76 lakh crores, that provided free food grain to 800 million people, free cooking gas for 80 million families for months, and cash directly to over 400 million farmers, women, elderly, the poor, and the needy. Even as a large section of citizens stayed home, milk, vegetables, fruit suppliers, health and sanitary workers, truck drivers, railways and public transport workers, bank employees, electricity workers, our annadatas, police, firemen and the armed forces all had to go about their work as normal, but with the additional anxiety of the virus hanging over them. We recognize this, and I think I speak on behalf of everybody in this august house when I express my heartfelt gratitude to these men and women for how they were able to carry out their work and duty to provide for the nation's basics over those crucial months. Speaker, sir, for public good, honorable members of parliament and members of legislative assemblies too offered their salaries. In May 2020, the government announced the Atmanirbhar Bharat package. To sustain the recovery further into the year, we also rolled out 2 more Atmanirbhar packages, 2 and 3. Total financial impact of all the Atmanirbhar Bharat packages, including measures taken by the RBI, was estimated to be about 27.1 lakh crores, which amounts to more than 13% of our GDP. As a government, we kept a watch on the situation and were proactive in our responses. The government, led by the Prime Minister, stretched its resources to deliver for most vulnerable sections of our society, the poorest of the poor, the Dalits, the tribals, the elderly, the migrant workers, and our children. The Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, the 3 Atmanirbhar packages, and announcements made later were like 5 mini budgets in themselves. The Atmanirbhar packages accelerated our pace of structural reforms, redefinition of MSMEs, commercialization of the mining sector, agriculture and labor reforms, privatization of public sector undertakings, One Nation, One Ration Card, production-linked incentive schemes are some of the notable reforms carried out during this period. Faceless income tax assessment, DBT, and financial inclusion are the others. Today,
India has 2 vaccines available and has begun medically safeguarding not only her own citizens against COVID-19, but also those of 100 or more countries. It is added comfort to know that 2 or more vaccines are also expected soon. Honorable Prime Minister launched the vaccination drive by crediting and thanking our scientists. We are ever grateful for the strength and rigor of their efforts. Having said that, we are all reminded time and again that our fight against COVID-19 continues into 2021. Now, just as it happened after the 2 world wars, there are signs that the political, economic, and strategic relations in the post-COVID world are changing. This moment in history is the dawn of a new era, one in which India is well poised to truly be the land of promise and hope. I borrow the words of Rabindranath Tagore. Faith is the bird that feels the light and sings when the dawn is still dark. Faith is the bird that feels the light and sings when the dawn is still dark. In this spirit, I can't help but recall the joy that we as cricket-loving nation felt after the Team India's recent spectacular success in Australia. It has reminded us of all the qualities that we as a people, particularly our youth, epitomize of having abundant promise and the unsuppressed thirst to perform and to succeed. Today, data shows that India now has one of the lowest death rate of 112 per million population and one of the lowest active cases of about 130 per million. This has laid the foundation to the revival we are seeing now in the economy. This budget will be the first of this new decade. This budget will also be a digital budget, and that has happened with all your support. So far, only 3 times has a budget followed a contraction in the economy. All such contractions earlier were as a result of situations typical to India. This time, the contraction in our economy is due to a global pandemic, just like in several other countries. Having said that, I want to confidently state that our government is fully prepared to support and facilitate the economy's reset. This budget provides every opportunity for our economy to raise and capture the pace that it needs for a sustainable growth. 2021 is the year of many important milestones for our history. I mention a few of these. It is the 75th year of independence, 60 years of Goa's accession to India, 50 years of the 1971 India-Pakistan War. It will be the year of the 8th census of independent India. It will also be India's turn at the BRICS presidency, the year for our Chandrayaan-3 mission, and the Haridwar Mahakumbh. Honorable Speaker, before I commence Part A of the budget, I want to take a moment to acknowledge how isolating and distancing seemed like insurmountable challenges for a country like ours that has people coming together in times of crisis. It hurts us in many ways. It hurt us in many ways. I bow my head in respect to every citizen for the endurance shown in facing what was an undeniably a tough year for all our physical and mental well-being. Part A. In Part A, I wish to lay a vision for Atmanirbhar Bharat. Atmanirbhar Bharat or Atmanirbharta is not a new idea. Ancient India was largely self-reliant and equally a business epicenter of the world. Atmanirbhar Bharat is an expression of the 130 crore Indians who have full confidence in their capabilities and skills.
We are already part of international groupings such as the G20 and the BRICS, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, and the International Solar Alliance are realities today due to India's efforts. The proposals in Part A will further strengthen the sankalp of nation first, doubling farmers' income, strong infrastructure, healthy India, good governance, opportunities for youth, education for all, women empowerment, and inclusive development, among others. Additionally, also on the path to fast implementation are the 13 promises we had made in the budget of 2015-16, which were to materialize during the Amrit Mahotsav of 2022 on the 75th year of our independence. They too resonate with the vision of Atmanirbharta. The budget proposals for 21-22 rest on 6 pillars: health and well-being, physical and financial capital and infrastructure, inclusive development for aspirational India, reinvigorating human capital, innovation and R&D, and a 6th, minimum government and maximum governance. I now move to talking about the first pillar, health and well-being. Even at the outset, I would like to say that the investment on health infrastructure in this budget has increased substantially. Progressively, as institutions absorb more, we shall commit more. Taking a holistic approach to health, we focus on strengthening 3 areas: preventive, curative, and well-being. Health systems. A new centrally sponsored scheme, PM Atmanirbhar Swasth Bharat Yojana, will be launched with an outlay of about 64,180 crores over 6 years. This will develop capacities of primary, secondary, and tertiary care health systems, strengthen existing national institutions, and create new institutions to cater to detection and cure of new and emerging diseases. This will be in addition to the National Health Mission. The main interventions under the scheme are support for over 17,000 rural and 11,000 urban health and wellness centers, setting up integrated public health labs in all districts, and 3,382 block public health units in 11 states, establishing critical care hospital blocks in 602 districts and 12 central institutions, strengthening of National Center for Disease Control, its 5 regional branches and 20 metropolitan health surveillance units, expansion of the integrated health information portal to all states and UTs to connect all public health labs, operationalization of 17 new public health units, and strengthening of 33 existing public health units at points of entry, that is, at 32 airports, 11 seaports, and 7 land crossings, setting up of 15 health emergency operations centers and 2 mobile hospitals, and setting up of a National Institution for One Health, a regional research platform for WHO, World Health Organization, Southeast Asia Region Office, 9 biosafety level 3 laboratories, and 4 regional national institutes for virology. Nutrition. To strengthen nutritional content, delivery, outreach, and outcome, we will merge the Supplementary Nutrition Program and the Poshan Abhiyan and launch the Mission Poshan 2.0. We shall adopt an intensified strategy to improve nutritional outcomes across 112
aspirational districts. Universal coverage of water supply. The World Health Organization has repeatedly stressed the importance of clean water, sanitation, and clean environment as a prerequisite to achieving universal health. The Jal Jeevan Mission Urban will be launched. It aims at universal water supply in all 4,378 urban local bodies with 2.86 crores household tap connections, as well as liquid waste management in 500 Amrit cities. It will be implemented over 5 years with an outlay of 2,87,000 crores. Swachh Bharat and Swasth Bharat. For further Swachhata of urban India, we intend to focus on complete fecal sludge management and wastewater treatment, source segregation of garbage, reduction in single-use plastic, reduction in air pollution by effectively managing waste from construction and demolition activities, and bioremediation of all legacy dump sites. The Urban Swachh Bharat Mission 2.0 will be implemented with a total financial allocation of 1,41,678 crores over a period of 5 years from 2021. Clean air. To tackle the burgeoning problem of air pollution, I propose to provide an amount of 2,217 crores of rupees for 42 urban centers with a million-plus population in this budget. Scrapping policy. We are separately announcing, Honorable Speaker, a voluntary vehicle scrapping policy to phase out old and unfit vehicles. This will help in encouraging fuel-efficient, environment-friendly vehicles, thereby reducing vehicular pollution and oil import bills. Vehicles would undergo fitness tests in automated fitness centers after 20 years in case of personal vehicles and after 15 years in case of commercial vehicles. Details of the scheme will be separately shared by the ministry. Vaccines. The pneumococcal vaccine, a made-in-India product, is presently limited to only 5 states. It will be rolled out across the country. This will avert more than 50,000 child deaths annually. Honorable Speaker, I have provided 35,000 crores of rupees for COVID-19 vaccine in this year 21-22. I am committed to provide further funds if required. So the budget outlay for health and well-being is 2,23,846 crores in this BE 21-22, as against the BE of only 94,452 crores, and it marks an increase of 137%. The details of the same are at Annexure 1 of the speech. Honorable Speaker, I now move to the second pillar, physical and financial capital and infrastructure. Atmanirbhar Bharat, production-linked incentive schemes are things which I would like to place an emphasis. For a $5 trillion economy, our manufacturing sector has to grow in double digits on a sustained basis. Our manufacturing companies need to become an integral part of global supply chains, possess core competence and cutting-edge technology. To achieve all of the above, PLI schemes to create manufacturing global champions for an Atmanirbhar Bharat have been announced for 13 sectors. For this, the government has committed nearly 1.97 lakh crores over 5 years starting this financial year.
This initiative will help bring scale and size in key sectors, create and nurture global champions, and provide jobs to our youth. Textiles. To enable the textile industry to become globally competitive, attract large investments, and boost employment generation, a scheme of Mega Investment Textiles Park will be launched in addition to the PLI scheme. This will create world-class infrastructure with plug-and-play facilities to create global champions in exports. 7 textile parks will be established over 3 years. Infrastructure. The National Infrastructure Pipeline, which I announced in December 2019, is the first of its kind. Whole of government exercise ever undertaken by Government of India. The NIP was launched with 6,835 projects. The project pipeline has now expanded to 7,400 projects. Around 217 projects worth rupees 1.10 lakh crores under some key infrastructure ministries have been completed. The NIP is a specific target which this government is committed to achieving over the coming years. It will require major increase in funding from both the government and the financial sector. In this budget, I propose to take concrete steps to do this in 3 ways. Firstly, by creating the institutional structures. Secondly, by a big thrust on monetizing assets. And thirdly, by enhancing the share of capital expenditure in central and state budgets. Infrastructure needs long-term debt financing. A professionally managed development financial institution is necessary to act as a provider, enabler, and catalyst for infrastructure financing. Accordingly, I shall introduce a bill to set up a development financial institution. I have provided a sum of 20,000 crore rupees to capitalize this institution. The ambition is to have a lending portfolio of at least 5 lakh crores for this DFI within 3 years' time. Debt financing of InvITs and rates by foreign portfolio investors will be enabled by making suitable amendments in the relevant legislations. This will further ease access of finance to InvITs and rates, thus augmenting funds for infrastructure and real estate sectors. Asset monetization. Monetizing operating public infrastructure. Monetizing operating public infrastructure assets is a very important financing option for new infrastructure construction. A national monetization pipeline of potential brownfield infrastructure assets will be launched. An asset monetization dashboard will also be created for tracking the progress and to provide visibility to investors. Some important measures in the direction of monetization are National Highways Authority of India and the PGCIL each have sponsored one InvIT that will attract international and institutional investors. 5 operational roads with an estimated enterprise value of 5,000 crores of rupees are being transferred to the NHAI InvIT. Similarly, transmission assets of value 7,000 crores will be transferred to the PGCIL InvIT. Railways will monetize dedicated freight corridor assets for operations and maintenance after commissioning. A next lot of airports will be monetized for operations and management concessions.
Other core infrastructure assets that will be rolled out under the asset monetization programs are NHAI operational toll roads, 2 transmission assets of PGCL, 3 oil and gas pipelines of GAIL, Gas Authority of India Limited, IOCL and HPCL, airports, Authority of India airports in Tier 2 and 3 cities, other railway infrastructure assets, warehousing assets of CPSE, such as the Central Warehousing Corporation and NAFED, among others, and sports stadiums. Sharp increase in capital budget. In the BE 2020-21, we had provided for 4.12 lakh crores for capital expenditure. It was our effort that in spite of resource crunch, we should spend more on capital, and we are likely to end this year at around 4.39 lakh crores, which I have provided in the RE of 2020-2021. For 21-22, I propose a sharp increase in capital expenditure and thus have provided 5.54 lakh crores, which is 34.5% more than the BE of 2020-2021. Of this, I have kept a sum of more than 44,000 crores in the budget head of the Department of Economic Affairs to be provided for projects, programs, or departments that show good progress in capital expenditure and are in need of further funds. Over and above this expenditure, we would also be providing more than 2 lakh crores to states and autonomous bodies for their capital expenditure. We will also work out specific mechanisms to nudge states to spend more of their budget on creation of infrastructure. Roads and highways infrastructure. More than 13,000 kilometer length of roads at a cost of 3.3 lakh crores has already been awarded under the 5.35 lakh crores Bharatmala Pariyojana project, of which 3,800 kilometers have been constructed. By March 2022, we would be awarding another 8,500 kilometers and complete an additional 11,000 kilometers of national highway corridors. To further augment road infrastructure, more economic corridors are also being planned. Some are 3,500 kilometers of national highway works in the state of Tamil Nadu at an investment of 1.03 lakh crores. These include Madurai-Kollam corridor, Chittoor-Tachur corridor, and construction will start next year. Second, 1,100 kilometers of national highway works in the state of Kerala at an investment of 65,000 crores, including 600 kilometer section of Mumbai-Kanyakumari corridor in Kerala. Third, 675 kilometers of highway works in the state of West Bengal at a cost of 25,000 crores, including upgradation of existing road Kolkata-Siliguri. National highway works of around 19,000 crores are currently in progress in the state of Assam. Further works of more than 34,000 crores
covering more than 1,300 kilometers of national highways will be undertaken in the state in the coming 3 years. Some of the flagship corridors and other important projects that would see considerable activity in 2021-22 are in Annexure 2 to my speech. I am also providing an enhanced outlay of 1,18,101 crores for Ministry of Road Transport and Highways, of which 1,08,230 crores is for capital, the highest ever provided. Railway infrastructure. Honorable Speaker, sir, Indian Railways have prepared a National Rail Plan for India 2030. The plan is to create a future-ready railway system by 2030. Bringing down the logistic costs for an industry is at the core of our strategy to enable Make in India. It is expected that Western Dedicated Freight Corridor and Eastern Dedicated Freight Corridor will be commissioned by June 2022. The following additional initiatives are also proposed. The Sonnagar-Gomo sections, 263 kilometers of Eastern Dedicated Freight Corridor, will be taken up in PPP mode in this year itself. Gomo-Dankuni section of 274.3 kilometers will be also taken up shortly in short succession. We will undertake future dedicated freight corridor projects, namely East Coast Corridor from Kharagpur to Vijayawada, East-West Corridor from Bhusaval to Kharagpur to Dankuni, and North-South Corridor from Itarsi to Vijayawada. Detailed project reports will be undertaken in the first phase. Broad gauge route kilometers, RKM as I referred to, electrified is expected to reach 46,000 kilometers, 46,000 RKM. That is 72% by end of 2021 from 41,548 RKMs on 1st October 2020. 100% electrification of broad gauge routes will be completed by December 2023. For passenger convenience and safety, the following measures are being proposed. We will introduce the aesthetically designed Vista Dome LHB coach on tourist routes to give better travel experience to passengers. The safety measures undertaken in the past few years have borne results. To further strengthen this effort, high-density network and highly utilized network routes of Indian Railways will be provided with an indigenously developed automatic train protection system that eliminates train collision due to human error. I am providing a record sum of 1,10,055 crores for railways, of which 1,07,100 crores is for capital expenditure only. Urban infrastructure. We will work towards raising the share of public transport in urban areas through expansion of metro rail networks and augmentation of city bus services. A new scheme will be launched at a cost of 18,000 crores to support augmentation of public bus transport services. The scheme will facilitate deployment of innovative PPP models to enable private sector players to finance, to acquire, to operate, and to maintain over 20,000 buses. The scheme will boost the automobile sector, provide fillip to economic growth, create employment opportunities for our youth, and enhance ease of mobility for urban residents. A total of 702 kilometers of conventional metro
is operational and another 1,016 kilometers of metro and RRTS is under construction in 27 cities. 2 new technologies, that is Metro Light and Metro Neo, will be deployed to provide metro rail systems at much lesser cost with same experience, convenience and safety in Tier 2 cities and peripheral areas of Tier 1 cities also. Central counterpart funding will be provided to Kochi Metro Railway Phase 2 of 11.5 kilometer at a cost of 1,957.05 crores. Chennai Metro Railway Phase 2 of 118.9 kilometers at a cost of 63,246 crores. Bengaluru Metro Railway Project Phase 2A and 2B of 58.19 kilometers at a cost of 14,788 crores. Nagpur Metro Rail Project Phase 2 and Nashik Metro at a cost of 5,976 crores and 2,092 crores respectively. Power infrastructure. The past 6 years have seen a number of reforms and achievements in power sector. We have added 139 gigawatts of installed capacity, connected an additional 2.8 crore households, and added 1.41 lakh circuit kilometers of transmission lines. The distribution companies across the country are monopolies, either government or private. There is a need to provide choice to the consumers by promoting competition. A framework will be put in place to give consumers alternatives to choose from among more than one distribution companies. I read that sentence again. A framework will be put in place to give consumers alternatives to choose from among more than one distribution company. The viability of distribution companies is a serious concern. A revamped, reforms-based, results-linked power distribution sector scheme will be launched with an outlay of 3,05,984 crores over 5 years. The scheme will provide assistance to DISCOMs for infrastructure creation, including prepaid smart metering, feeder separation, upgradation of systems, etc., tied to financial improvements. Prime Minister, while speaking at the 3rd Reinvestment Conference in November 2020, had announced plans to launch a comprehensive national hydrogen energy mission. It is now proposed to launch a hydrogen energy mission in 2021-22 for generating hydrogen from green power sources. Ports, shipping and waterways. Major ports will be moving from managing their operational services on their own to a model where a private partner will manage it for them. For the purpose, 7 projects worth more than 2,000 crores will be offered by the major ports on private-public partnership mode in FY 21-22. A scheme for promoting flagging of merchant ships in India will be launched by providing subsidy support to Indian shipping companies in global tenders floated by ministries and CPSCs. An amount of 1,624 crores will be provided over 5 years. This initiative will enable greater training and employment opportunities for Indian seafarers
besides enhancing Indian companies' share in global shipping. India has enacted Recycling of Ships Act in 2019 and acceded to the Hong Kong International Convention. Around 90 ship recycling yards at Alang in Gujarat have already achieved HKC compliant certificates. Efforts will be made to bring more ships to India from Europe and Japan. Recycling capacities of around 4.5 million light displacement ton LDT will be doubled by 2024. This is expected to generate an additional 1.5 lakh jobs for our youth. Petroleum and natural gas. Our government has kept fuel supplies running across the country without interruption during the COVID-19 lockdown period. Taking note of the crucial nature of the sector in people's lives, the following key initiatives are being announced. 1. Ujjwala scheme, which has benefited 8 crore households, will be extended to cover 1 crore more beneficiaries. We will add 100 more districts in next 3 years to the city gas distribution network. A gas pipeline project will be taken up in the Union Territory of Jammu and Kashmir. An independent gas transport system operator will be set up for facilitation and coordination of booking of common carrier capacity in all natural gas pipelines on a non-discriminatory open access basis. Financial capital. I propose to consolidate the provisions of the PB Act 1992, Depositories Act 1996, Securities Contracts Regulation Act 1956, and Government Securities Act 2007 into a rationalized single Securities Markets Code. The government would support the development of a world-class fintech hub at the GIFT IFSC. To instill confidence amongst the participants in corporate bond market during times of stress and to generally enhance secondary market liquidity, it is proposed to create a permanent institutional framework. The proposed body would purchase investment-grade debt securities both in the stressed and normal times and help in the development of the bond market. In the budget 2018-19, government had announced its intent to establish a system of regulated gold exchanges in the country. For the purpose, SEBI will be notified as the regulator, and Warehousing Development and Regulatory Authority will be strengthened to set up a commodity market ecosystem arrangement, including vaulting, assaying, logistics, etc., in addition to warehousing. Towards investor protection, I propose to introduce an investor charter as a right of all financial investors across all financial products. To give a further boost to the non-conventional energy sector, I propose to provide additional capital infusion of 1,000 crores to Solar Energy Corporation of India and 1,500 crores to Indian Renewable Energy Development Agency. I propose to amend the Insurance Act 1938 to increase the permissible FDI limit from 49% to 74% in insurance companies and allow foreign ownership and control with safeguards. Under the new structure, the majority of directors on the board and key management persons would be resident Indians, with at least 50% of directors being independent directors and specified percentage of profits
being retained as general reserve. Stressed asset resolution by setting up a new structure. The high level of provisioning by public sector banks of their stressed assets calls for a measure to clean up the bank books. An asset reconstruction company limited and asset management company would be set up to consolidate and take over the existing stressed debt and then manage and dispose of the assets to alternative investment funds and other potential investors for eventual value realization. Recapitalization of PSB. To further consolidate the financial capital capacity of PSBs, further recapitalization of 20,000 crores is proposed in 21-22. Deposit insurance. Last year, government had approved an increase in the deposit insurance cover from 1 lakh rupees to 5 lakhs for bank customers. I shall be moving amendments to DICGC Act 1961 in this session itself to streamline the provision so that if a bank is temporarily unable to fulfill its obligations, the depositors of such bank can get easy and time-bound access to their deposits to the extent of the deposit insurance cover. This would help depositors of banks that are currently under stress. To improve credit discipline, while continuing to protect the interests of small borrowers, for NBFCs with minimum asset size of 100 crores, the minimum loan size eligible for debt recovery under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interests, Frbm Act 2002, it is proposed to be reduced from the existing level of 50 lakhs to 20 lakhs. Company matters. The decriminalization of the procedural and technical compoundable offences under Companies Act 2013 is now complete. I now propose to take up decriminalization of the Limited Liability Partnerships Act 2008. Honourable Speaker, I propose to revise the definition under the Companies Act 2013 for small companies by increasing the threshold for paid-up capital from not exceeding 50 lakh to not exceeding 2 crores and turnover from not exceeding 2 crores to not exceeding 20 crores. This will benefit more than 2 lakh companies in easing their compliance requirements. As a further measure which directly benefits startups and innovators, I propose to incentivize the incorporation of one-person companies by allowing one-person companies to grow without any restriction on paid-up capital and turnover, allowing their conversion into any other type of company at any time, reducing the residency limit for an Indian citizen to set up an one-person company from 182 days to 120 days, and allow also non-resident Indians to incorporate OPCs in India. This will be a big boost for startups. To ensure faster resolution of cases, the NCLT framework will be strengthened, e-court system shall be implemented, and alternate methods of debt resolution and special framework for MSMEs shall be introduced. During the coming fiscal, we will be launching data analytics, artificial intelligence, machine learning driven MCA 2.1 version
to MCA 21 version 3.0. MCA 21 version 3.0. This version 3.0 will have additional modules for e-scrutiny, e-adjudication, e-consultation, and compliance management. Disinvestment and strategic sale. In spite of COVID-19, we have kept working towards strategic disinvestment. A number of transactions, namely BPCL, Air India, Shipping Corporation of India, Container Corporation of India, IDBI Bank, Bharat Earth Movers Limited, Pavan Hans, Neelachal Ispat Nigam Limited, among others, would be completed in 21-22. Other than IDBI Bank, we propose to take up the 2 public sector banks and 1 general insurance company in the year 21-22. This would require legislative amendments, and I propose to introduce the amendments in this session itself. In 21-22, we would also bring the IPO of LIC, for which I am bringing the requisite amendments in this session itself. In the Atmanirbhar package, I had announced that we will come out with a policy of strategic disinvestment of public sector enterprises. I'm happy to inform the House that the government has the government has approved the said policy. The policy provides a clear roadmap for disinvestment in all non-strategic and strategic sectors. We have kept 4 areas that are strategic, where bare minimum CPSEs will be maintained and rest privatized. In the remaining sectors of all CPSEs will be privatized. The main highlights of the policy are mentioned in Annexure 3. To fast forward the disinvestment policy, I'm asking NITI to work out on the next list of center public sector companies that would be taken up for strategic disinvestment. To similarly incentivize states to take to disinvestment of their public sector companies, we will work out an incentive package of central funds to states. Idle assets will not contribute to Atmanirbhar Bharat. The non-core assets largely consist of surplus land with government ministries and departments and public sector enterprises. Monetizing of land can either be by way of direct sale or concession, or by similar means. This requires special abilities, and for this purpose, I propose to use a special purpose vehicle in the form of a company that would carry out this activity. In order to ensure timely completion of closure of sick or loss-making CPSEs, we will introduce a revised mechanism that will ensure timely closure of such units. I have estimated 1,75,000 crores as receipts from disinvestment in BE 21-22. Government financial reforms. Under the Treasury Single Account, the TSA system, autonomous bodies directly draw funds from the government's account at the time of actual expenditure, saving interest costs. We will extend the TSA system for universal application from 21-22. On the recommendation of the 15th Finance Commission, we have undertaken a detailed exercise to rationalize and bring down the number of centrally sponsored schemes. This will enable consolidation of outlays for better impact. The government is committed to the development of multi-state cooperatives and will provide all support to them. To further streamline the ease of doing business for cooperatives,
I propose to set up a separate administrative structure for them. So the third pillar of Atmanirbhar Bharat, inclusive development for aspirational India. Honorable Speaker, sir, under this pillar, I will cover agriculture and allied sectors, farmers' welfare and rural India, migrant workers and labor, and financial inclusion. Agriculture. Our government is committed to the welfare of farmers. The MSP regime has undergone a sea change to assure price that is at least 1.5 times the cost of production across all commodities. The procurement has also continued to increase at a steady pace. This has resulted in increase in payment to farmers substantially. In case of wheat, a total amount paid to farmers in 2013-14. Honorable Speaker, sir, the data that I give now is important for all honorable members to kindly hear. In case of wheat, the total amount paid to farmers in 2013-14 was 33,874 crores. In 2019-20, it was 62,802 crores. And even better, Honorable Speaker, in 2020-2021, this amount paid to farmers was 75,060 crores. Honorable Speaker, again an important fact, the number of wheat growing farmers that were benefited increased in 2020-21 to 43.36 lakhs compared to 35.57 lakhs in 2019-20. That much of an increase within 1 year. For paddy, again an important data. For paddy, the amount paid in 2013-14 was 63,928 crores. In 2019-20, this increased to 1,41,930 crores. Even better, in 2020-2021, in 2020-21, this is further estimated, and I'm saying this is further estimated because the procurement is ongoing, and therefore I can't give you the final figure. This is further estimated to increase to 1,72,752 crores. The number of farmers benefited increased from 1.24 crores in 2019-20 to 1.54 crores in 2020-21. In the same way, Honorable Speaker, sir, in the case of pulses, the amount paid in 2013-14 was 236 crores. In 2019-20, this was increased to 8,285 crores. Now in 2021, it is at 10,530 crores. More than 40 times increase from 2013-14. The receipts to cotton farmers have seen a stupendous increase from 90 crores in 2013-14 to 25,974 crores in
I'm giving you data as of 27th January 2021. This is bound to increase. From 90 crores for cotton farmers in 2013-14 to 25,974 crores in 2021. All the details in complete narration is available in Annexure 4 to my speech. Early this year, Honorable Prime Minister had launched the Swamitwa scheme. Under this, a record of rights is being given to property owners in villages. Up till now, about 1.80 lakh property owners in 1,241 villages have been provided cards. I propose during 21-22 to extend this to cover all states and union territories. To provide adequate credit to our farmers, I have enhanced the agricultural credit target to 16.5 lakh crores in this year. We will focus on ensuring increased credit flow to animal husbandry, Pashupalan, dairy, and to Matsyakar, to the fisheries. We are enhancing the allocation to the Rural Infrastructure Development Fund from 30,000 crores to 40,000 crores. The Micro Irrigation Fund, with a corpus of 5,000 crores, has been created under NABARD. I propose to double it by augmenting it by another 5,000 crores. To boost value addition in agriculture and allied products and their exports, the scope of Operation Green Scheme, that is presently applicable to only tomatoes, onions, and potatoes, will be enlarged to include 22 perishable crops. Around 1.68 lakh crore farmers, around 1.68 crore farmers are registered, and 1.14 lakh crores of rupees trade value has been carried out through e-NAMs, the National Agricultural Market. Keeping in view the transparency and the competitiveness that e-NAM has brought into the agricultural market, 1,000 more mandis will be integrated with e-NAM. Honorable Speaker, sir, with all this, the Agricultural Infrastructure Fund would be made available to the APMCs for augmenting their infrastructure facilities. Fisheries. I am proposing substantial investments in the development of modern fishing harbors and fish landing centers. To start with, 5 major fishing harbors, Kochi, Chennai, Visakhapatnam, Paradip, and Petua Ghat, will be developed as hubs for economic activity. We will also develop inland fishing harbors and fish landing centers along the banks of rivers and waterways. Seaweed farming is an emerging sector with potential to transform the lives of coastal communities. It will provide large-scale employment and additional incomes. To promote seaweed farming and cultivation, I propose a multi-purpose seaweed park to be established in Tamil Nadu. Migrant workers and laborers. We have launched the One Nation, One Ration Card scheme, through which beneficiaries can claim their rations anywhere in the country. Migrant workers in particular benefit from the scheme. Those staying away from their families can partially claim their ration where they are stationed, while their family in their native places can claim the rest. I am happy to inform you that One Nation, One Ration Card plan is under implementation by 32 states and union territories, reaching about 69 crore beneficiaries. That's a total of 86% beneficiaries covered. The remaining 4 states and UTs will be integrated in the next few months. To further extend our efforts towards the unorganized labor force, migrant workers in particular, I propose to launch a portal that will collect relevant information
on gig workers, building and construction workers, among others. This will help formulate health, housing, skill, insurance credit, and food schemes for all migrant workers. We will conclude a process that began 20 years ago with the implementation of the 4 labor codes. For the first time globally, social security benefits will be extended to gig and platform workers. Minimum wages will apply to all categories of workers, and they will all be covered by the Employees State Insurance Corporation. Women will be allowed to work in all categories and also in the night shifts with adequate protection. At the same time, compliance burden on employers will be reduced with a single registration and licensing and online returns. Financial inclusion. To further facilitate credit flow under the scheme of Stand Up India for the scheduled castes and scheduled tribes and also women, I propose to reduce the margin money requirement from 25% to 15% only, and to also include loans for activities in allied sectors in allied activities in agriculture. We have taken a number of steps to support the MSME sector. In this budget, I have provided 15,700 crores to this sector, more than double of the last year's B. Honorable Speaker, sir, I now go to the 4th pillar, reinvigorating human capital. The national education policy announced recently has had good reception. In school education, more than 15,000 schools will be qualitatively strengthened to include all components of the national education policy. They shall emerge as exemplar schools in their regions, hand-holding and mentoring other schools to achieve the ideals of policy. 100 new Sainik schools will be set up in partnership with NGOs, private schools, and states. Higher education. In Budget 2019-20, I had mentioned about the setting up of a higher education commission in India. We would be introducing the legislation this year to implement the same. It will be an umbrella body having 4 separate vehicles for standard setting, accreditation, regulation, and funding. Many of our cities have various institutions, universities, and colleges supported by the Government of India. Hyderabad, for example, has about 40 major institutions. In 9 such cities, we will create a formal umbrella structure so that these institutions can have better synergy while also retaining their internal autonomy. A glue grant will be set aside for this purpose. For accessible higher education in Ladakh, I propose to set up a central university in Leh. The other important projects to be taken up as a part of the NEP are listed in Annexure 5. Scheduled caste and scheduled tribes welfare. We have set ourselves a target of establishing 750 Eklavya model residential schools in our tribal areas. I propose to increase the unit cost of each such school from 20 crores, which is what it is now, to 38 crores, and for hilly and difficult areas to 48 crores. This would help creating robust infrastructure facilities for our tribal students. We have revamped the post-metric scholarship scheme for the welfare of scheduled caste students. I have also enhanced the central assistance in this regard. We are allotting 35,219 crores for 6 years till 25-26 to benefit 4 crores scheduled caste students. Skilling. In 2016,
we had launched the National Apprenticeship Promotion Scheme. The government proposes to amend the Apprenticeship Act with a view to further enhancing apprenticeship opportunities for our youth. We will realign the existing scheme of National Apprenticeship Training Scheme for providing post-education apprenticeship training of graduates and diploma holders in engineering. Over 3,000 crores will be provided for this purpose. An initiative is underway, Honorable Speaker, in partnership with the United Arab Emirates to benchmark skill qualifications, assessment and certification, accompanied by the deployment of certified workforce. We also have a collaborative inter-training program between India and Japan to facilitate transfer of Japanese industrial and vocational skills, techniques, and knowledge. We will take forward this initiative with many more countries also. Innovation and R&D. In my budget speech of 2019, I had announced the National Research Foundation. We have now worked out the modalities, and the NRF outlay will be of 50,000 crores over 5 years. It will ensure that the overall research ecosystem in the country is strengthened with focus on identified national priority thrust areas. There has been a manifold increase in digital payments in the recent past. To give a further boost to digital transactions, I earmarked 1,500 crores for a proposed scheme that will provide financial incentive to promote digital mode of payment. We will undertake a new initiative, National Language Translation Mission. This will enable the wealth of governance and policy-related knowledge on the Internet being made available in major Indian languages. The new Space India Limited, a PSU, under the Department of Space, will execute the PSLV CS-51 launch, carrying the Amazonia satellite from Brazil, along with a few smaller Indian satellites. As part of the Gaganyaan mission activities, 4 Indian astronauts are being trained on generic spaceflight aspects in Russia. The first unmanned launch is slated for December 2021. Our oceans are a storehouse of living and non-living resources. To better understand this realm, we will launch a deep ocean mission with a budget outlay of more than 4,000 crores over 5 years. This mission will cover deep ocean survey exploration and projects for the conservation of deep sea biodiversity. I come to the 6th pillar, Honorable Speaker, minimum government, maximum governance. Honorable Speaker, sir, this is the last of the 6 pillars. This will outline plans for reforms in one of our core principles of minimum government, maximum governance. We have taken a number of steps to bring reforms in tribunals in the last few years for speedy delivery of justice. Continuing with the reforms process, I now propose to take further measures to rationalize the functioning of tribunals. We have introduced the National Commission for Allied Healthcare Professionals Bill in Parliament. National Commission for Allied Healthcare Professionals Bill in the Parliament, with a view to ensure transparent and efficient regulation of 56 allied healthcare professionals. Additionally, to bring about transparency, efficiency, and governance reforms in the nursing profession, the National Nursing and Midwifery Commission Bill will be introduced by the government for passing. To have ease of doing business for those who deal with government or CPSCs and carry out contracts
I propose to set up a conciliation mechanism and mandated its use for quick resolution of contractual disputes. This will instill confidence in private investors and contractors. Honorable Speaker, sir, the forthcoming census could be the first digital census in the history of India. For this monumental milestone marking task, I have allocated 3,768 crores in this year, 21-22. Honorable Speaker, Goa is celebrating the Diamond Jubilee year of the state's liberation from Portuguese rule. From the Government of India's side, I propose to grant 300 crores to the Government of Goa for the celebration. I propose to provide 1,000 crores for the welfare of tea workers, especially women and children in Assam and West Bengal. A special scheme will be devised for the same. Fiscal position. Fiscal position. In these last few paragraphs of part A of my speech, I draw the attention of this august House to the fact that at the beginning of the current financial year, the pandemic's impact on the economy resulted in a weak revenue inflow. This was combined with high expenditure to provide essential relief to vulnerable sections of the society, especially the poor, the women, scheduled castes, and scheduled tribes. Unlike many other countries, we opted for a series of medium-sized packages during the pandemic so that we could calibrate and target our response according to the evolving situation. Once the health situation stabilized and the lockdown was being slowly lifted, we switched to ramping up government spending so as to revive domestic demand. As a result, against an original BE expenditure of 30.42 lakh crores for 2020-21, our RE estimates are 34.50 lakhs. 30.42 now within the year going up to 34.5 lakh crores. We have maintained quality of expenditure. The capital expenditure estimated in the RE is 4.39 lakh crores as against 4.12 lakh crores in the BE stage. So the beginning of the year, we had marked only 4.12 lakh, whereas it is 4.39 lakh crores as we end the year. Fiscal deficit in RE 2020-2021 is pegged at 9.5% of the GDP. Fiscal deficit in RE 2020 to 2021 is pegged at 9.5% of GDP. We have funded this through government borrowings, multilateral borrowings, small saving funds, and short-term borrowings. We would need another 80,000 crores, for which we would be approaching the market in these 2 months. We would be needing another 80,000 crores, for which we would be approaching the markets in these 2 months. To ensure that the economy is given the required push, our BE estimates for expenditure in 21-22 are 34.83 lakh crores. This includes 5.54 lakh crores as capital expenditure, an increase of 34.5% over the BE figure of 2020-2021. The fiscal deficit in BE 21-22 is estimated to be
6.8% of the GDP. The gross borrowing from the market for the next year would be around 12 lakh crores. We plan to continue with our path of fiscal consolidation and intend to reach the fiscal deficit level below 4.5% of the GDP by 2025-2026, with a fairly steady decline over the period. We hope to achieve the consolidation by first increasing the buoyancy of tax revenue through improved compliance, and secondly, by increased receipts from monetization of assets, including public sector enterprises and land. The Contingency Fund of India is being proposed to be augmented. The Contingency Fund of India is being proposed to be augmented from 500 crores to 30,000 crores through finance bill. In accordance with the views of the 15th Finance Commission, we are allowing a normal ceiling of net borrowing for the states at 4% of GSDP for the year 21-22. A portion of this ceiling will be earmarked to be spent on incremental capital expenditure. Additional borrowing ceiling of 0.5% of the GSDP will also be provided subject to conditions. States will be expected to reach a fiscal deficit of 3% of GSDP by 2023-24 as recommended by the 15th Finance Commission. In the July 2019-20 budget, I introduced the Statement 27 on extra budgetary resources. It disclosed the borrowings of the government agencies that went towards funding Government of India schemes and whose repayment burden was on the government. In my 2020-21 budget, I enhanced the scope and coverage of that statement by including the loans provided by government to the FCI, the Food Corporation of India. Taking a step further in this direction, I propose to discontinue the NSSF loan to FCI for food subsidy, and accordingly, budget provisions have been made in RE 2020-21 and in the BE 2021-22. The extra budgetary resource details are at Annexure 6. We know that the Frbm Act mandates fiscal deficit of 3% of GDP to be achieved by 31st March 2020-2021. The effect of this year's unforeseen and unprecedented circumstances has necessitated the submission of a deviation statement under Sections 4 of Subclause 5 and Section 7, Subclause 3b of the Frbm Act, which I am laying on the table of the House as part of the Frbm documents. Towards achieving central government fiscal deficit along the broad path that I have already indicated, I will be introducing an amendment to the Frbm Act. Honorable Speaker, on the 9th of December 2020, the 15th Finance Commission submitted its final report covering the period 2021 to 2026 to the Rashtrapati Ji. The government has laid the Commission's report along with the explanatory memorandum in the Parliament, retaining the vertical shares of the states at 41%. We recognize our commitment to fiscal federalism and propose, therefore, to adhere to this recommendation. Jammu and Kashmir in the 14th Finance Commission was entitled to get devolution being a state. Now the funds of the UTs of Jammu Kashmir and Ladakh would be provided by the centre. I have also provided on the Commission's recommendation 1,18,452 crores as revenue deficit grant to 17 states in 21-22 as against 74,340 crores to 14 states in 2020-21.
Honorable Speaker, I would now move to Part B of my speech. Honorable Speaker, the world is facing a serious challenge of the pandemic and its aftershock. In these trying times, when many economies are struggling to revive, our people and our industry have exhibited remarkable resilience. As I mentioned already, post-pandemic, a new world order seems to be emerging, one in which Asia is poised to occupy a prominent position, and India will have a leading role therein. In this scenario, our tax system has to be transparent, efficient, and should promote investments and employment in our country. At the same time, it should put minimum burden on our taxpayers. I borrow the words of Thiruvalluvar, the saint. Yetralum, Eatalum, Kathalum, Katha Vaguthalum, Nalla Valladarasu. A king or a ruler is the one who creates and acquires wealth, protects and distributes it for common good. Tirukkural. Direct tax proposals. Keeping this in mind, the words of Tirukkural, our government introduced a series of reforms in the direct tax system for the benefit of our taxpayers and the economy. Few months prior to the pandemic, in order to attract investments, we slashed our corporate tax rate to make it among the lowest in the world. The dividend distribution tax too was abolished. The burden of taxation on small taxpayers was eased by increasing rebates. In 2020, the return filers saw a dramatic increase to 6.48 crores from 3.31 crores in 2014. In the direct tax administration, we had recently introduced the faceless assessment and faceless appeal. I now seek to take further steps to simplify the tax administration, ease compliance, and reduce litigation. Relief to senior citizens. I begin my direct tax proposals by offering my pranam to our senior citizens. Many of them, despite having foregone several basic necessities of their own, have strived to build our nation. Now in the 75th year of independence of our country, when we continue our endeavor with renewed vigor, we shall reduce compliance burden on our senior citizens who are 75 years of age and above. For senior citizens who only have pension and interest income, I propose exemption from filing their income tax returns. The paying bank will deduct the necessary tax on their income. Reduction in time for income tax proceedings. This is a very key announcement if you are asking. Honorable Speaker, presently an assessment can be reopened up to 6 years and in serious tax fraud cases for up to 10 years. As a result, taxpayers have to remain under uncertainty for a very long time. I therefore propose to reduce this time limit for reopening of assessments to 3 years from the present 6 years. In serious tax evasion cases too, only where there is evidence of concealment of income of 50 lakh or more in a year. In serious tax evasion cases too, only where there is evidence of concealment of income of 50 lakh or more in a year can the assessment be reopened up to 10 years. Even this reopening can be done only after the approval of the Principal Chief Commissioner, the highest level of Income Tax Department. Setting up the Dispute Resolution Committee. Honorable Speaker,
It has been the resolve of this government to reduce litigation, which mars the present taxation system. The government came out with the Direct Taxation Vivad Se Vishwas scheme to give taxpayers an opportunity to settle long-pending disputes and be relieved to further strain on their time and resources. The response from taxpayers has been the best ever, as over 110,000 taxpayers have already opted to settle tax disputes of over 85,000 crores under the scheme. To further reduce litigation for small taxpayers, I propose to constitute a dispute resolution committee for them, which will be faceless to ensure efficiency, transparency, and accountability. Anyone with a taxable income up to 50 lakh and disputed income up to 10 lakh shall be eligible to approach the committee. Faceless IT-AT. For ease of compliance and to reduce discretion, we are committed to make the taxation processes faceless. The government has already introduced faceless assessment and appeal this year. The next level of income tax appeal is the Income Tax Appellate Tribunal. I now propose to make this tribunal faceless. We shall establish a national faceless Income Tax Appellate Tribunal Center. All communication between the tribunal and the appellant shall be electronic. Where personal hearing is needed, it shall be done through video conferencing. Relaxations to NRI. When non-resident Indians return to India, they have issues with respect to their accrued incomes in their foreign retirement accounts. This is usually due to mismatch in taxation period. They also face difficulties in getting credit for Indian taxes in foreign jurisdictions. I propose to notify rules for removing their hardship of double taxation. Exemption from audit. Currently, if your turnover exceeds 1 crore, you have to get your accounts audited. In February 2020 budget, I had increased the limit for tax audit to 5 crores for those who carry out 95% of their transactions digitally. To further incentivize digital transactions and to reduce compliance burden, I propose to increase this limit for tax audit for such persons from 5 crores to 10 crores. Relief for dividend. In the previous budget, I had abolished the dividend distribution tax in order to incentivize investment. Dividend was made taxable in the hands of shareholders. Now, in order to provide ease of compliance, I propose to make dividend payment to rate and InvIT exempt from TDS. Further, as the amount of dividend income cannot be estimated correctly by the shareholders for paying advance tax, I propose to provide that advance tax liability on dividend income shall arise only after the declaration or payment of dividend. Also, for the foreign portfolio investors, I propose to enable deduction of tax on dividend income at lower treaty rate. Attracting foreign investment into infrastructure sector. In the last budget, for attracting foreign investment in the infrastructure sector, we had granted 100% tax exemption, subject to certain conditions, to foreign sovereign wealth funds and pension funds on their income from investment in Indian infrastructure. We have noticed that few of such funds are facing difficulties in meeting some of the conditions. In order to ensure that a large number of funds invest in India, I propose to relax some of these conditions relating to prohibition on private funding, restriction on commercial activities, and direct investment in infrastructure. In order to allow funding of infrastructure by issue of zero-coupon bonds, I propose to make notified infrastructure debt funds eligible to raise funds by issuing
tax-efficient zero-coupon bonds. Affordable housing and rental housing. This government sees housing for all and affordable housing as priority areas. In July 2019 budget, I provided an additional deduction of interest amounting to 1.5 lakh for loan taken to purchase an affordable house. I propose to extend the eligibility of this condition by 1 more year to 31st March 2022. The additional deduction of 1.5 lakh shall therefore be available for loans taken up to 31st March 2022 for the purchase of affordable houses. Further, to keep up the supply of affordable houses, I propose that the affordable housing projects can avail a tax holiday for 1 more year till 31st March 2022. These are available now for projects also. We are committed to promote supply of affordable rental housing for migrant workers. For this, I propose to allow tax exemption for notified affordable rental housing projects. Tax incentives to IFSC. As I mentioned in Part A of this speech, the government is committed to making the International Financial Services Center in GIFT City a global financial hub. In addition to the tax incentives already provided, I propose to include, among others, tax holiday for capital gains for aircraft leasing companies, tax exemption for aircraft lease rentals paid to foreign lessors, tax incentive for relocating foreign funds in the IFSC, and to allow tax exemption to the investment division of foreign banks located in the IFSC. Pre-filling of returns. Honorable Speaker, in order to ease compliance for the taxpayer, details of salary income, tax payments, TDS, etc., already come pre-filled in income tax returns. To further ease filing of returns, details of capital gains from listed securities, dividend income, and interest from banks, post office, etc., will also be now pre-filled. Relief to small trusts. We hope to reduce compliance burden on small charitable trusts running educational institutions and hospitals. So far, there is a blanket exemption to such entities whose annual receipt does not exceed 1 crore of rupees. I now propose to increase this amount to 5 crores. Labor welfare. We have noticed that some employers deduct the contribution of employees toward provident funds, superannuation funds, and other social security funds, but do not deposit these contributions within the specified time. For these employees, this means a loss of interest or income. In cases where an employer later becomes financially unviable, non-deposit results in a permanent loss for the employees. In order to ensure that employees' contributions are deposited on time, I reiterate that the late deposit of employees' contribution by the employer will not be allowed as deduction to the employer. Incentives for startups. In order to incentivize startups in the country, I propose to extend the eligibility for claiming tax holiday for startups by 1 more year, till 31st March 2022. Further, in order to incentivize funding for the startups, I propose to extend the capital gains exemption for investment in startups by 1 more year, till 31st March 2022. Sir, I now come to indirect tax proposals, GST.
Before I come to my indirect tax proposals, I would like to appraise the House on GST. The GST is now 4 years old, and we have taken several measures to further simplify it. Some of the measures include nil return through SMS, quarterly return and monthly payment for small taxpayers, electronic invoice system, validated input tax statements, pre-filled editable GST return, and staggering of returns filing. The capacity of GST and system has also been enhanced. We have also deployed deep analytics and artificial intelligence to identify tax evaders and fake billers and launched special drives against them. The results speak for themselves. We have made record collections in the last few months. The GST Council has painstakingly thrashed out thorny issues. As chairperson to the Council, I want to assure this House that we shall take every possible measure to smoothen the GST further and to remove anomalies such as inverted duty structure. Custom duty rationalization. Our custom duty policy should have the twin objective of promoting domestic manufacturing and helping India get on to global value chain and export better. The thrust now has to be on easy access to raw materials and exports of value-added products. Towards this, last year, we started overhauling the customs duty structure, eliminating 80 outdated exemptions. I also thank everyone who responded overwhelmingly to a crowdsourcing call for suggestions on this revamp. I now propose to review more than 400 old exemptions this year. I repeat, I now propose to review more than 400 old exemptions this year. We will conduct this through extensive consultations, and from 1st October 2021, we will put in place a revised customs duty structure free of distortions. I also propose that any new customs duty exemptions, therefore, henceforth will have validity up to 31st March following 2 years from the date of the issue. Electronic and mobile phone industry. Domestic electronic manufacturing has grown rapidly. We are now exporting items like mobiles and chargers. For greater domestic value addition, we are withdrawing a few exemptions on part of chargers and subparts of mobiles. Further, some parts of mobiles will move from nil rate to a moderate 2.5%. Iron and steel. MSMEs and other user industries have been severely hit by a recent sharp rise in iron and steel prices. Therefore, we are reducing customs duty uniformly to 7.5% on semis, flats, and long products of non-alloy, alloy, and stainless steels. To provide relief to metal recyclers, mostly MSMEs, I am exempting duty on steel scrap for a period up to 31st March 2022. Further, I am also revoking ADD and CVD on certain steel products. Also, to provide relief to copper recyclers, I am reducing duty on copper scrap from 5% to 2.5%. Textiles. The textile sector generates employment and contributes significantly to the economy. There is a need to rationalize duties on raw material inputs to man-made textiles. We are now bringing nylon chain on par with polyester and other man-made fibers. We are uniformly reducing the BCD rates on caprolactam, nylon chips, nylon fiber, and yarn to 5%. This will help the textile industry, MSMEs, and also overall exports.
Chemicals. We have calibrated customs duty rates on chemicals to encourage domestic value addition and to remove inversions. Apart from other items, we are reducing customs duty on naphtha to 2.5% to correct inversion. Gold and silver presently attract a basic customs duty of 12.5%. Since the duty was raised from 10% in July 19, prices of precious metals have risen sharply. To bring it closer to previous levels, we are rationalizing customs duty on gold and silver. Renewable energy. In Part A, we have already acknowledged that solar energy has huge promise for India. To build up domestic capacity, we will notify a phased manufacturing plan for solar cells and solar panels. At present, to encourage domestic production, we are raising duty on solar inverters from 5% to 20% and on solar lanterns from 5% to 15%. Capital equipment and auto parts. There is immense potential in manufacturing heavy capital equipment domestically. We will comprehensively review the rate structure in due course. However, we are revising duty rates on certain items immediately. We propose to withdraw exemptions on tunnel boring machine. It will attract a customs duty of 7.5% and its parts a duty of 2.5%. We are raising customs duty on certain auto parts to 15% to bring them on par with general rate on auto parts. MSME products. We are proposing certain changes to benefit MSMEs. We are increasing duty from 10 to 15% on steel screws and plastic builder wares. On prawn feed, we increase it from 5 to 15%. We are rationalizing exemption on import of duty-free items as an incentive to exporters of garments, leather, and handicraft items. Almost all of these items are made domestically by our MSMEs. We are withdrawing exemption on imports of certain kinds of leathers as they are domestically produced in good quantity and quality, mostly by MSMEs. We are also raising customs duty on finished synthetic gemstones to encourage domestic processing. Agriculture products to benefit farmers. We are raising customs duty on cotton from nil to 10%, on raw silk and silk yarn from 10 to 15%. We are also withdrawing end-use based concession on denatured ethyl alcohol. Currently, rates are being uniformly calibrated to 15% on items like maize, bran, rice bran, oil cake, and animal feed additives. There is an immediate need to improve agricultural infrastructure so that we produce more while also conserving and processing agricultural output efficiently. This will ensure enhanced remuneration for our farmers. To earmark resources for this purpose, I propose an agricultural infrastructure and development cess on a small number of items. However, while applying this cess, we have taken care not to put additional burden on consumers on most items. Rationalization of procedures and easing of compliance. For their judicious application, we propose certain changes in the provisioning related to ADD, anti-dumping duty, and CVD, countervailing duty levies. To complete customs investigation, we are prescribing definite timelines. In 2020, we rolled out the Turant Customs Initiative, which brought in faceless, paperless, and contactless customs measures. With effect from September 2020, we have implemented a new procedure for administration of rules of origin. This has helped in putting a check on misuse of FTAs. The specific details of direct and indirect tax changes proposed are listed in the annexure to my speech. Honorable Speaker, sir, with these words, I commend the budget to this august House. Thank you. Item number 1. Mani Mantri ji, item number 1. Sorry, I don't have it with me. Sir, I wish to place on table the 15th Finance Commission report. Item number 3. Mani Mantri ji.
So I wish to lay on the table the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003, the medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. Item number 4. So I wish to seek your permission to move for leave to introduce the Finance Bill 2021. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। श्री प्रहलाद जोशी जी। With your permission, I rise to present the 18th report of Business Advisory Committee. माननीय सदस्यगण, माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की प्रतियां प्रकाशक फलक पर उपलब्ध है। सदस्य अपनी प्रति प्रकाशन फलक से प्राप्त कर सकते हैं। माननीय सदस्यगण, जैसा कि आपको समाचार 2 के माध्यम से पहले सूचित किया जा चुका है कि बजट की प्रतियां आपको मेंबर्स पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। सभा की कार्रवाई मंगलवार दिनांक 2 फरवरी 2021 को दोपहर 4 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो इस वक्त आप देख रहे थे सीधा प्रसारण और संसद में लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना तीसरा बजट रखा। नए भारत का और कह सकते हैं आत्मनिर्भर भारत का ये बजट था और आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा उसको लेकर के बड़े बड़े कुछ ऐलान भी हैं। 6 स्तंभों पर टिका हुआ ये जो आज का बजट था मूल रूप से 6 स्तंभों पर टिका हुआ था और इसमें कहें तो फोकस एक तरह से स्वास्थ्य पर है। और अजय कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें वेल्थ भी है और हेल्थ भी है और ये आत्मनिर्भर भारत का एक बड़ा बजट था। क्या कहेंगे आप? ये आम बजट कहा जाता है, इसका नाम आम बजट है, लेकिन ये आम बजट है नहीं अशोक जी। ये बहुत ही खास बजट है और खास बजट है क्योंकि ये नए इंडिया की बात करता है, आत्मनिर्भर भारत की बात करता है और जिस चीज का आपने जिक्र किया कि स्वास्थ्य सेक्टर इस बजट का सबसे बड़ा फोकस है। तो अगर आप देखें स्वास्थ्य सेक्टर में जो खर्चा है वो पिछले साल के मुकाबले 137% बढ़ाया गया। बहुत बड़ा अंतर। अगर आप आंकड़ों में मैं आपको बताऊं तो करीब 94,000 करोड़ रुपीस हेल्थ सेक्टर पे खर्च होते थे, अब वो बढ़ करके 2,34,000 करोड़ रुपए हो जाएंगे। तो आप सोचिए देश को हेल्थ सुपर पावर बनाने की दिशा में जिसका जिक्र मेरे ख्याल से ये जो रिपोर्ट आई थी आपकी जो सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण, उसने कहा इस देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जो भारत का हेल्थ सेक्टर है वो उस पर केंद्र सरकार भी खर्च करती है और राज्य सरकारें भी खर्च करती हैं और इसलिए इन दोनों खर्चों को मिलाना होगा। लेकिन ये पहली बार है कि केंद्र सरकार अपनी ओर से कह रही है कि हम हेल्थ सेक्टर को एक बहुत बड़ा पुश देने जा रहे हैं और हम प्रिवेंटिव केयर पर ध्यान देंगे, यानी बीमारियों को होने ही नहीं देंगे और अगर बीमारियां होती भी हैं तो उसको एक तरह से रोकथाम के लिए एक बड़ी R&D पर व्यवस्था की जाएगी। कोरोना की वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है वो इस बजट में कर दिया गया है। इसका मतलब कि कोरोना से तो लड़ाई जो है जीत ही रहे हैं हम और साथ साथ और भी जो बीमारियां उनसे लड़ने का भी एक खाका तैयार हो गया। लेकिन इस बजट की बात करें तो बजट को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और अगर कहें तो अजय शेयर बाजार ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और शेयर बाजार जिस तरह से उछाल मार रहा है और सिर्फ शेयर बाजार नहीं बल्कि मैं आपको ये भी बताऊं कुछ विपक्ष के नेताओं के ट्वीट भी हैं। मैं आपको बताऊं कि कुछ कांग्रेस के जो पूर्व सांसद थे उन्होंने ट्वीट करके भी कहा है कि ये जो बजट है जिस तरह से इसमें इंफ्रा पे जोर दिया गया है और स्पेंडिंग पर है उससे रोजगार भी बढ़ेगा और निवेश भी आएगा। तो विपक्ष तारीफ कर रहा है सरकार। जी बिल्कुल जो है विपक्ष की तरफ से कुछ इस तरह के ट्वीट भी है। मैं आपको जरूर इस बारे में बताऊंगा इस तरह के कौन से ट्वीट है। लेकिन जाहिर तौर पर इस पूरे बजट को लेकर अभी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आपको कुछ ही देर में मिलने लगी, हम तमाम प्रतिक्रियाएं देंगे। लेकिन कुल मिलाकर अजय इसमें एक बात जो बड़ी बात है जो आम आदमी के हिसाब से बात हो रही थी और खास करके करदाता बड़ा उम्मीद कर रहे थे। हालांकि सरकार ने साफ तौर पर कहा कि यह नया बोझ डालने का वक्त नहीं है,
75 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग हैं उनको छूट दी गई है। जो सरकार के पास उपलब्ध जो एक ढांचा था उसमें सरकार ने बेहतर से बेहतर और ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश की है। देखिए, ये समझना होगा कि ये बजट किस छाया में बनाया गया। ये एक बहुत बड़ी महामारी जो कि 100 साल से भी ज़्यादा वक्त में एक बार आती है, और वित्त मंत्री ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि कॉन्ट्रैक्शन, इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन इससे पहले इतिहास में केवल 3 बार हुआ है, और बजट में वो तीनों वजह से जो इंटरनल यानी जो घरेलू कारण थे उसकी वजह से हुआ है। पहली बार हमने देखा है कि जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है इकोनॉमी में वो ग्लोबल वजह से हुआ, और इसकी वजह से जो महामारी है, सभी लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद कोई कोरोना सेस लगा सकती हैं वित्त मंत्री, कोई ऐसा कुछ नहीं किया गया। ये कहा जा रहा था कि शायद कुछ नया टैक्स, क्योंकि टैक्स आ नहीं रहा है सरकार के पास में, तो क्या कुछ किया जाएगा, क्या बजट का साइज सिकुड़ेगा, सभी लोग ये कह रहे थे। लेकिन मैं आपको खुशी से बताना चाहता हूं कि पिछले साल जो करीब 30 लाख करोड़ का बजट था, इस साल 34,83,000 करोड़ रुपए का बजट है, तो उसमें भी बढ़ोतरी की गई है। और एक बड़ी बात कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो खर्च किया जाता है, नए खर्च होते हैं जिसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, उसमें भी भारी बढ़ोतरी की गई है। यानी सरकार अब रोजगार के सृजन के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए जो फोकस करने जा रही है उसमें ज्यादा पैसे खर्च किया जाएंगे। इसको आप क्वालिटी इंपैक्ट करते हैं। तो आइए डालते हैं एक नजर, क्या कुछ है बड़ी बातें इस बजट की, और इस बजट की बड़ी जो बातें आई उस पर नजर डाल लेते हैं। तो चलिए, अगले 5 साल में 1,41,678 करोड़ रुपए के साथ शहरी स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण का क्रियान्वयन होगा। ये देखिए 2,23,846 करोड़ रुपए आवंटित। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये हेल्थ बजट है। आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ इसको आप हेल्थ बजट कह सकते हैं। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जिसकी हम लगातार बात कर रहे थे। और देश में 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। 3 सालों में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे जिसमें नौकरियां आएंगी। सार्वजनिक बस परिवहन सेवाओं के लिए 18,000 करोड़ रुपए की लागत की एक नई योजना जो है वो तैयार की गई है। तो मेट्रो जो परिवहन व्यवस्था है उसमें सबसे ज्यादा खर्च किए जाएंगे। कई नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर फोकस किया जाना है। और आत्मनिर्भर भारत के लिए जैसा कि आपको पता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, ये एक बड़ी बात। बीमा क्षेत्र में एफडीआई, जिसकी आप बात कर रहे थे अशोक, कि क्यों शेयर बाजार में बढ़त आ रही है, बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 74% बढ़ी है। एक बड़ा रिफॉर्म, यानी ये जो बजट है न केवल इंक्लूसिव डेवलपमेंट की तरफ बजट है, बल्कि ये मार्केट ओरिएंटेड या फिर कहें रिफॉर्म्स का भी। एलआईसी का आईपीओ, बिल्कुल स्पष्ट तौर पर वित्त मंत्री ने घोषणा कर दी कि इस बार एलआईसी का आईपीओ आएगा। और अगर आप देखें पूंजीगत व्यय, जिसकी हम बात कर रहे थे, 5.54 लाख करोड़ रुपीस कैपिटल एक्सपेंडिचर इस देश में किया जाएगा, जो कि काफी एक बड़ा इनटेक है। अगर पिछले साल से हम तुलना करें, राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तक तैयार हो चुकी है, उस पर भी अब तक का सबसे बड़ी सहायता रेलवेज को दिए जाने का प्रावधान इस बजट में किया गया है। और मुंबई कन्याकुमारी आर्थिक गलियारे की घोषणा की गई है। यानी कि आप देखिए कि किस तरह से दक्षिण भारत तक जो है बजट जो है पश्चिम से दक्षिण भारत को जोड़ने के लिए एक बड़ी परियोजना का रेलवे को 1.10 लाख करोड़ का बजट आवंटन हुआ है। सबसे बड़ा बजट है रेलवे का। जी, मेट्रो परियोजनाओं की, जिससे हम बता रहे थे कि अब अगला जो फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर का वो मेट्रो परियोजनाओं की तरफ है। और सबसे ज्यादा बजट में अगर इंक्रीमेंट दिखा है अगर किसी सेक्टर में, तो इस सेक्टर में दिखा है जिसमें आप मेट्रो परियोजनाओं की बात कर रहे हैं। अलग अलग अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा जो ये हाइड्रोजन एनर्जी मिशन, ये एक नया मिशन है ऊर्जा क्षेत्र को एक आमूलचूल परिवर्तन के लिए। बहुत बड़ी बात है कि अगर आप अगले दशक की बात करते हैं अशोक, तो आपको जो एनर्जी सेक्टर है उसमें 3 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अगले 5 सालों में प्लान्ड है। तो एक तरह से ये रोड मैप देता है। ये अब देखिए उज्ज्वला स्कीम, जिसमें 8 करोड़ लोग पहले से ही हैं, उसको आप 1 करोड़ और भी आप लाभार्थी शामिल करने जा रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक समावेशी बजट है, एक तरह से फ्यूचरिस्टिक बजट है। और शहरी स्वच्छ भारत में ये तो बहुत ही बड़ा मिशन है, बहुत बड़ा। शहरों को साफ बनाने, बिल्कुल 5 साल में 1,41,678 करोड़ रुपए स्वच्छता पर। और अजय, खास बात यह भी इसमें स्वच्छता की बात है, पर्यावरण की बात है। तो जो फ्यूचरिस्टिक जो चीजें हैं उसमें इसकी बात, आप मेट्रो की बात कर रहे थे, देखिए सार्वजनिक परिवहन की बात होती है हमेशा, तो आप सार्वजनिक परिवहन की भी बात कर रहे हैं, आप यहाँ शहरी स्वच्छता की भी बात कर रहे हैं, यहाँ पर्यावरण की भी बात कर रहे हैं। तो एक तरह से देखें तो वास्तव में किस तरह से एक नए भारत हम जिसकी बात करते हैं उसकी तरफ फोकस है।
चलिए देखते हैं ये जो अभी आप बात कर रहे थे शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो शहरों का कायाकल्प है वो अब किया जाना है। जो जल जीवन मिशन था गाँव में अभी तक फोकस था, अब उसको शहरों के लिए ले जाया गया है। और ये देखिए रुपया कहाँ से आता है। अब मैं आपको बताऊं कि जो कर्ज लिया जाता है 37 पैसे, 1 रुपये में से 37 पैसे कर्ज की जरिए आता है। जीएसटी से करीब 15 पैसे। आयकर अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो 14 पैसे आता है 1 रुपये में। कॉर्पोरेट टैक्स से 13 पैसे संकलित होते हैं सरकार के पास में। जो उत्पाद शुल्क है उससे 9 पैसे। जो नॉन टैक्स रेवेन्यूज है उसमें 6 पैसे। सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी में 3 पैसे और नॉन डेट कैपिटल रिसीट में 5 पैसे। ये पूरे का पूरा जो पैसा है, यानी ये लोग कहते हैं कि ये पैसा आएगा कहां से, ये जो सवाल उठाते हैं, ये वित्त मंत्री ने दिखाने की कोशिश की कि क्या कुछ है इसका पूरा का पूरा खाका क्या है, अब कहां से ये पैसे आएंगे। अब ये देखिए कि रुपया जाएगा कहां। तो जो केंद्र की प्रायोजित योजनाएं हैं अशोक जी, उसमें 9 पैसे खर्च होते हैं 100 रुपए में से। मतलब अगर आप 100 रुपए करें तो 9 रुपए आपको उसमें खर्च। सब्सिडी के तौर पर 8 रुपए खर्च किए जाते हैं, जिसमें खाद्य सब्सिडी है, फर्टिलाइजर सब्सिडी है। रक्षा पर 8 रुपए खर्च किए जाने हैं। तो रक्षा बजट में भी बढ़ोतरी की गई है। डिफेंस एक बहुत ही बड़ी प्राथमिकता है। ब्याज के भुगतान पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है 20 रुपए। मतलब समझ लीजिए 20% आपका ब्याज के भुगतान पर ही चला जाता है। कर और शुल्कों में राज्यों का जो हिस्सा है उसमें 16 पैसे खर्च होते हैं। वित्त आयोग और दूसरे अंतरण जो कि राज्य सरकारों को दिए जाने हैं उसमें 10 पैसे। और केंद्र की जो क्षेत्रीय योजनाएं हैं खासतौर पर उसमें 14 पैसे। और पेंशन के तौर पर 5 पैसे का खर्च किया जाता है। अगर 1 रुपए सरकार की आमदनी है तो ये कहां जाएगा, ये बताने की कोशिश। तो अब देखिए प्रमुख योजनाओं का आवंटन। मनरेगा पर जो 2020-21 में 1,11,500 करोड़ रुपए कोरोना की वजह से बढ़े, अब वो अगले साल के लिए 73,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। मनरेगा एक बहुत ही बड़ी फ्लैगशिप स्कीम है जिसको कंटिन्यू करते हुए अब सरकार को लगता है कि ये 73,000 करोड़ रुपए जो है ये मनरेगा के लिए काफी होंगे अगले साल की अगर हम बात करें तो। ये देखते हुए कि कोरोना टाइम में इस पर फोकस किया गया था। बिल्कुल। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन आप देखें तो इसमें भी बढ़ोतरी है। 28,000 करोड़ रुपए से बढ़कर के 34,300 करोड़ रुपए राष्ट्रीय शिक्षा मिशन पर खर्च किए जाएंगे। और बड़ी खास बात है, समावेशी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लेह जैसे क्षेत्र में अगर देश का पहला विश्वविद्यालय बनने जा रहा है तो आप समझिए वहां की स्थानीय व्यवस्था को कितना एक तरह से बढ़ावा मिलेगा। अगली योजना की तरफ हम चलें तो जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है जिसमें हम कर रहे थे, सबसे बड़ा फोकस है इसमें। देखिए ये केवल एक मिशन है, इसके साथ साथ पीएम जय योजना जोड़ लें। और जो मैं बात कर रहा था कि 2 लाख 2.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हेल्थ पर फोकस किया जाना है, उसका केवल एक छोटा सा कंपोनेंट है। 35,000 करोड़ रुपए से 35,500 करोड़ से बढ़ा करके 37,000 करोड़ रुपए 21-22 में खर्च किए जाने का प्रावधान है, जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। इसी तरह से पीएम किसान आपने देखा 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, लेकिन कोरोना काल में 1,13,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाले गए थे क्योंकि कोरोना की वजह से काफी मुश्किल हुई थी। इस साल के लिए भी 65,000 करोड़ रुपए का प्रावधान, यानी जो 2,000 रुपए की किश्त है वो किसानों के खाते में जाती रहेगी। और पीएम किसान के जो खाते हैं अशोक जी, अगर उनको जोड़ दिया गया है, कहां से जोड़ा गया है, सीधे कर्ज की योजना से जोड़ा गया है, तो उनको भी 4% पर कर्ज मिलेगा। मैं आपको बताऊंगा कि कितना जो एग्रीकल्चर डेट है, लेकिन मेट्रो प्रोजेक्ट आपके सामने। जी ये आप देखिए मेट्रो प्रोजेक्ट जो है 6,484 करोड़ था और ये बड़ा है। और इसके अलावा जल जीवन मिशन उसमें एक जो आप देख सकते हैं 11,218 करोड़ 2020-21, 2021-22 की बात करें तो 49,757 करोड़ रुपए। चलिए वित्त मंत्री बजट भाषण के मद्देनजर शेयर बाजार में भी भारी सकारात्मक माहौल देखा गया, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। और क्या कुछ देखा है, सेंसेक्स ने 1500 से ज्यादा अंकों की जो उछाल है वो देखी। और उसकी वजह वही है कि जो हम कह रहे थे कि एफडीआई की सीमा बढ़ाई गई और जो रिफॉर्म्स का ऐलान किया गया है इस बजट में, उसका असर स्पष्ट तौर पर आपको सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में दिखाई दिया है। जी हाँ, तो 1500 से ज्यादा अंकों से उछाल देखा गया है। और वित्त मंत्री के बजट से शेयर बाजार में उछाल, यानी कि इसको कह सकते हैं कि एक तरह की जो इस बजट को लेकर के सकारात्मकता का जो माहौल है वो शेयर बाजार में भी है और बाकी जगह भी इसको देख सकते हैं। सेंसेक्स में 1500 से ज्यादा अंकों का उछाल है। ऐसा बहुत कम होता है कि इतना बड़ा उछाल जो है बजट के बाद देखने को मिले। बढ़त के साथ खुला सेंसेक्स और इसमें 1500 अंकों का उछाल आया शेयर बाजार में वित्त मंत्री के बजट से। तो स्पष्ट तौर पर इसका मतलब यह है कि शेयर बाजार इसका स्वागत कर रहा है। और स्वागत इसलिए क्योंकि जो रिफॉर्म्स के
जो बड़े ऐलान है, अब बाजार को भी जो ये एक उम्मीद थी बाजार को कि आशंका थी कहें कि ये हो सकता है कोरोना से लग जाए, और उसकी वजह से आप 2-3 दिनों में आप देख रहे होंगे कि जो गिरावट थी अब वो बिल्कुल वापस आती हुई तेजी के साथ, और आज जबरदस्त स्वागत किया आज शेयर बाजार ने। और इस वक्त देखें तो हर सेक्टर में इस वक्त आपको तेजी का माहौल दिखाई दे रहा है। और जैसा मैंने कहा था, मैंने आपको बताया था, मिलिंद देवड़ा कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं, कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने इसको थम्स अप किया है, उन्होंने ट्वीट करके कहा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जॉब क्रिएशन हो गए इस बजट से। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि विपक्ष की तरफ से भी जो पहली प्रतिक्रियाएं आई हैं वो बहुत ही आशाजनक हैं कुल मिलाकर इस बजट को लेकर के। और क्योंकि जिस तरह के माहौल में ये बजट आया उसको देखते हुए लोगों को तमाम तरह की आशंकाएं भी थी, डर भी था कि किस तरह का बजट होगा ये, लेकिन इस बजट में जो आशंकाएं थी वो तमाम आशंकाएं निर्मूल साबित हुई और बजट से अब तक देखिए कोई भी सेक्टर जो है अशोक जी, कोई भी सेक्टर जो है वो नकारात्मक नहीं है। बैंक सबसे ज्यादा 6%, फाइनेंशियल सर्विसेज में 5% से ज्यादा, रियलिटी में 3%, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटो में भी 3% से ज्यादा, PSU की बात करें यहाँ भी 3% से ज्यादा का उछाल देखा गया। मेटल्स, टेलीकॉम, कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रीज, एनर्जी, हर जगह आप एक भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहां पर आपको गिरावट यानी बिकवाली का दौर दिखाई दे। हमारे साथ शुभमय आ चुके हैं जो कि वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं। बिल्कुल स्वागत है शुभमय जी आपका इस खास प्रोग्राम में। सबसे पहले आपकी पहली प्रतिक्रिया बजट को लेकर के कि क्या किस तरह का बजट आप देखते हैं? फ्यूचरिस्टिक बजट है, डेकेड का पहला बजट, डिजिटल बजट, हम लोग बहुत बातें कर चुके हैं, आपने क्या खास बात देखी? अजय, हम जब दूरदर्शन में बजट की बात करते हैं तो नेचुरली सबसे पहले बात आता है कि किसको क्या मिला। ये जनरली बजट के ऊपर एक लोगों का एक अच्छा भी रहता है। मैं इससे थोड़ा सा हटके इसलिए कहना चाहूँगा कि इस बारी का जो बजट था वो ये आंकड़ा देखने के लिए नहीं था। इसकी सबसे बड़ी चीज़ इस पर जिसे कहते हैं टू आस्क थे, टू चीज़ जो ज़रूरी थी। एक, इस माहौल में जो पिछले साल का इतना भयानक कोविड का वार रहा है उसके ऊपर चलते सरकार हेल्थ सेक्टर में किस तरह के चेंजेस लाते हैं, अपना क्या कमिटमेंट दिखाते हैं। दूसरा, कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसकी बहुत ज़रूरत है पूरी इंडिया में। जब हम कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट का माहौल गिर चुका था, उसमें कितना इजाफा करते हैं। और इन दोनों चीज़ों में आप जो मार्केट का जो रिस्पॉन्स देख रहे हैं, सरकार ये दोनों चीज़ों पे खरे उतरे हैं। शुभ जी, जो वी रिकवरी की बात हो रही थी, ये बात बताया जा रहा है कि 11% IMF का प्रेडिक्शन है, कह सकते हैं कि उस दिशा में ये एक तरह से एक लॉन्चिंग पैड हो सकता है। क्योंकि इसका इसलिए आपने बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट कहा अशोक, क्योंकि इसमें वित्त मंत्री ने एक आंकड़ा प्रेजेंट किए हैं जो आमतौर के डिस्कशन में नहीं आता है, वो है फिस्कल डेफिसिट। हम फिस्कल डेफिसिट की बात बाद में करते हैं, लेकिन इस बार ये करना बहुत जरूरी है क्योंकि सारे एनालिस्ट का मोटा मोटी अंदाजा था कि इस साल का यानी FY21 का एस्टिमेट था 7%, 8, 7.5, पौने 8 तक। वित्त मंत्री खुद ही जाके बताए हैं कि 9.8%। और ये क्या बताता है कि सरकार अपना पूरा ट्रांसपेरेंटली अपने पूरे जो खर्च हुए हैं उन सब चीजों को सामने प्रस्तुत किए हैं, और अगले साल में भी कोई ऐसा स्टेप्स नहीं लिए हैं जिससे कहा जाता है कि फिस्कल कंट्रैक्शनरी हो, यानी कि जब गति देने की जरूरत है आप उस पर लगाम खींच रहे हो। वो लगाम खींचने का काम बिल्कुल नहीं किए हैं। जहां पे जितना जरूरत है उस चीज के लिए उन्होंने छूट दिया है, और 6.8% कोई खास बात नहीं है। इसीलिए मार्केट को इससे बहुत कॉन्फिडेंस मिला है कि ये एक ट्रांसपेरेंट सेट ऑफ नंबर्स है। इसके अंदर क्या क्या हो सकता है वो अलग बात है, लेकिन ये चीजें इस बारी बहुत जरूरत था, और खासकर उसमें वो करने के लिए वित्त मंत्री ने 2 चीजों का दिखाया कि मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए खर्च का पैसा ले दूंगी। 4,30,000 से उठाकर वो करीब 5,54,000 पे पहुंच जाता है, और दूसरा हेल्थ सेक्टर में। और ये करने के बाद निश्चित ही उनके पास पैसे नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़े दोनों जंप हैं वो देने के बाद। और खासकर तीसरा चीज, उन्होंने फूड कॉर्पोरेशन का जो बजट है उसको उन्होंने अपने ऊपर ले लिया कि ये NSSF में नहीं जाएगा। इसके बारे में भी बहुत सारे टीका टिप्पणी होते थे। तो कुल इन तीनों को करने के बाद सरकार के पास कोई जगह नहीं रहता है कि वो थोड़ा सा फ्रीबीज वगैरह करे। तो इस तरह से एक ट्रांसपेरेंट नंबर्स, जहां जरूरत है वो खर्च के लिए पुश, एंड थर्ड कि सरकार क्या करना चाहते हैं वो इकोनॉमी के लिए क्लीन सेट ऑफ नंबर्स करने। इसीलिए दिस बजट इज
मैं कहूँगा ये बहुत यूजफुल बजट है। यूजफुल बजट, और जो बात कर रहे थे लगातार वी शेप इकोनॉमी के में ग्रोथ के लिए, वापसी के लिए, और उसके लिए एक तरह का ये कह सकते हैं लॉन्चिंग पैड है। और हमारी संवाददाता श्यामा इस वक्त मुंबई से जुड़ रही हैं। श्यामा, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ है पहली प्रतिक्रिया मुंबई से? शेयर बाजार की प्रतिक्रिया हम देख चुके हैं, लेकिन वहां के इंडस्ट्री कैप्टन्स क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस बजट को लेकर के? ओवर टू यू। देखिए जी, सबसे पहले हमने बात की टाटा केमिकल्स के एक रिप्रेजेंटेटिव से। उन्होंने सबसे पहले यही बताया है कि जितना बजट से एक्सपेक्ट किया गया था उससे काफी अच्छा बजट रहा है इस बार का, और इसकी क्लियर इंडिकेशन है कि जो हमारी मार्केट्स है वो काफी अच्छे उछाल पर है। इसके अलावा अगर बात करें तो सारे सेक्टर्स को टच किया गया है इसमें। कोविड के बाद का तुरंत ये बजट है, तो माना जा रहा था कि ये एक ऐसा बजट होगा जो सबको अपलिफ्ट करने वाला बजट होगा। ठीक वही बात है यहाँ पर। आप देखिए सारे जितने भी पार्ट्स है जो हमारे लोअर स्ट्रेटा के हैं लोग सोसाइटी के, उन सभी के लिए भी यहाँ पर इस बजट में कुछ ना कुछ रखा गया है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं ये जो बजट है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास लेके ये बनाया गया है ये बजट को। और ओवरऑल अगर आप देखें तो कई सारे जगहों पर ऐसे पॉइंट्स उठाए गए हैं जो एक्सपेक्टेड था, और ये भी माना जा रहा है कि बहुत जरूरी था। कोई एक्सपर्ट या कोई इंडस्ट्री कैप्टन आपके साथ हैं इस वक्त बात करने के लिए? मैं वो जानना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल, हम एक्सपर्ट के लिए ही रुके हुए हैं। ठीक है श्यामा, मैं वापस आऊंगा, तो वो अभी बस अपना जैसे ही वो आपके पास आएंगे मैं आऊंगा आपके पास और उनका रिएक्शन लूंगा। और शेयर बाजार जिस तरह सलाम कर रहा है वो हम लगातार दिखा रहे हैं। एक बार फिर आपके पास आऊंगा। डॉक्टर चरण सिंह, मैं अब आपके पास आना चाहता हूं, क्या कुछ कहेंगे आप इस बजट को लेकर के? आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है, और आप किस तरह से देखते हैं कि फिस्कल कंसोलिडेशन बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली वित्त मंत्री सामने आई है और एक बड़ा रोड मैप दिखाई दिया है ग्रोथ ट्रेजेक्टरी का? बहुत ही अच्छा बजट है। मेरे मन में हमेशा एक बात होती है कि जो विजन और एम होती है, बजट जो हर साल आता है उस श्रृंखला में एक बिंदु होता है। हमारी विजन है कि हमने $5 ट्रिलियन और $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है जी। हमारे को यहाँ चोट लगी थी, दुनिया भर में ये महामारी आई थी, हम अकेले नहीं थे, उससे हमारी ग्रोथ पे असर हुआ है। तो वित्त मंत्री जी ने क्या कहा है, और इस बार जो मुझे बहुत अच्छी बात लगी है, एक हर चीज इस साल के लिए नहीं कही है, बिल्कुल 3 साल 5 साल में एक तरफ से मीडियम टर्म विजन दिया है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो हमें सब पता है, अभी ये पता लग गया कि अगले 3 और 5 साल में देश किस रास्ते पे चल रहा है, उससे एक सर्टेनिटी आ जाती है और ये भी समझ आ जाती है कि गवर्नमेंट की प्लानिंग मीडियम टू लॉन्ग टर्म चल रही है। दूसरी बात, मैं बहुत वर्षों से कह रहा हूं कि 3% फिस्कल डेफिसिट टू जीडीपी रेशियो ये कहां से आई है, इसकी कोई थ्योरेटिकल सैंक्टिटी नहीं है और कुछ खास उसका एम्पिरिकल एविडेंस नहीं है, और एडवांस कंट्रीज में उसे कोई फॉलो नहीं करता है डिफिकल्ट टाइम्स में। तो वही बात आज मुझे बहुत अच्छी लगी जब वित्त मंत्री जी ने खुल के कहा कि हमारा ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट इस वक्त 9.5% चल रहा है और अगले 4 साल के लिए हम उस पर कोई सोच नहीं रहे हैं, हम पैसा फजूल में नहीं कर रहे हैं, हमें पता है हम पैसा कहाँ लगा रहे हैं, पर अगले 2025-26 तक हम इसको 4% से नीचे जो ग्लोबल यार्डस्टिक मानी जाती है वहां नहीं ला रहे हैं। इस साल 9.5% है, अगले साल 6.5% है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हमारी यहाँ आपत्ति बढ़ गई, सेकंड पीक आ गई या और कोई नौबत आ गई, तो सरकार इतने अच्छे तरीके से चल रही है, इनको फिक्र नहीं है कि वो 6.5 का जो बजट एस्टिमेट है वो 8 भी हो गया तो कोई टेंशन की बात नहीं है। एक बोल्ड फेस जी, वित्त मंत्री का एक बोल्ड फेस जो है वो दिखाई देता है इस बजट में। वेदजैन साहब, मैं आपके पास आता हूं, पहला रिएक्शन आपसे। हम जब बात, चलिए वेदजैन जी के साथ जुड़ेंगे। चरण सिंह जी, आप बात कर रहे थे फिस्कल डेफिसिट की, और जिस तरह से सर्वेक्षण में कहा गया कि ठीक है क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हमारी फंडामेंटल्स पर ध्यान नहीं दे रही हैं और वो उनकी रेटिंग बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती है, तो वो भी दस्तावेज भी, और आज वित्त मंत्री ने भी स्पष्ट तौर पर पूरे दुनिया के निवेशकों को संदेश दे दिया है कि मेरा फिस्कल डेफिसिट अगर 6.8 अगले साल रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है और मुझे कोई चिंता की बात नहीं है, मुझे अपनी प्रायोरिटीज पता है और वहां पर कहां मुझे खर्च करना है मैं वो करूंगी। एग्जैक्टली वही चीज मुझे बहुत अच्छी लगी है। अच्छा, फिर पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं वो भी आप देखिए, उन्होंने जो अपने 6 पिलर बताए हैं वो सारे पिलर या ह्यूमन कैपिटल या इंफ्रास्ट्रक्चर या एमएसएमईज या स्टार्टअप्स पे पैसा जा रहा है या रिसर्च एंड इनोवेशन पे जा रहा है। तो यही तो सारी चीजें होती हैं जो देश को प्रगति के रास्ते पे लेके जाती हैं।
तो जो ग्रोथ रेट का इन्होंने 11% इस बार कहा है, IMF ने भी 11.5% कहा था, और पिछली बार जो विश्लेषण, आर्थिक विश्लेषण 3 दिन पहले आया है, उसमें बड़ा क्लियर कहा गया था, रेटिंग एजेंसी का आपने पॉइंट बताया है, पर उन्होंने कहा था कि काउंटर फिस्कल पॉलिसी जरूरी है। काउंटर फिस्कल पॉलिसी का क्या मतलब है? अगर टैक्सेस वगैरह गिर रहे हैं तो सरकार अपना खर्चा बढ़ा रही है, तो वही चीज हुई है। तो मुझे ये बहुत अच्छा बजट लगा है और मुझे ग्रोथ ओरिएंटेड बजट लगा है, और इसमें मुझे यहां तक लग रहा है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे काफी फायदा होगा। इस 1 साल के अंदर जो रिवर्स माइग्रेशन के कारण अनएम्प्लॉयमेंट पे जोर था वो रिवर्स हो जाएगा और एम्प्लॉयमेंट पे भी बहुत फर्क पड़ेगा। MSM इसको मिलेगी। ये एक बड़ी बात है जो आप एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं डॉक्टर चरण सिंह। कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर आपको लगता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बजट के हिसाब से आपको लगता है कौन से सेक्टर में अब ज्यादा हम ओपनिंग देखेंगे? देखिए, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत जोर दिया है, रोड्स पे दिया है, टेक्सटाइल पार्क्स पे दिया है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की बात कर रहे हैं। इन सारी चीजों में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होनी है। टेक्सटाइल में मुझे खास करके लग रहा है जो टेक्सटाइल पार्क्स बनेंगी उसमें काफी फायदा हो जाएगा। अच्छा, जहां तक फिर उन्होंने स्टार्टअप पे कहा है कि स्टार्टअप पे हम लोग फिर टैक्स हॉलीडे दे रहे हैं। मुझे लग रहा है यंग ग्रेजुएट्स यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के ये स्टार्टअप्स में काफी बढ़ोतरी हो जाएगी उससे। तो एक किस्म का। एक मिनट डॉक्टर चरण सिंह, आप एक मिनट हम आपके पास आते हैं। फिक्की के अध्यक्ष जो हैं वो क्या कह रहे हैं इस वक्त, हम सीधा आपको वो सुनाते हैं। Very badly impacted because of a national lockdown of the kind that we saw, and we are ending the year with a 9.5% deficit, and yet for the government to not rush to contain and choke the economy and to rein in the deficit, but to be very prudent, be calibrated, and yet be very prudent and focus on growth. That I think is the biggest highlight. I think the fact that there are no significant new taxes, we've seen a cess, we'll need to know a little more about it, but the fact that there are no new taxes either on the corporate sector or on individuals is a sign that the government recognizes the stress and challenge that everybody is going through, and I think this will send out a really, really strong message. In terms of the initiatives, I think as Pankaj Bhai was saying, the spotlight on social infrastructure, including healthcare and education, especially healthcare, is really, really welcome. It couldn't have come a day too soon. On education, there are a whole lot of initiative. I personally think that the new national education policy is a very progressive document, and this seeks to build on that. That's a very good one. On physical and financial infrastructure, I think there are a lot of very, very high quality initiatives. All of you have talked about it. I won't go into too many details of that, but I think broadly the investments in infrastructure by and large, and also segments that will propel growth for other sectors, whether it is roads, real estate, affordable housing, and some amount of initiative in urban transport management, etc. All of those are going to be really, really significant. What I'm very excited about is the fact that the government remains very ambitious on its disinvestment agenda, and that there is a plan, as Nana was saying, that this whole creation of the SPV is probably a more structured, more disciplined and accountable way of pushing that agenda. What has come in the budget this year is also an attempt to monetize our land banks, and I think this is a really, really strong and bold step. Usually these steps can get controversial, but the government has clearly shown a commitment that it is not shying away from taking strategic, bold decisions that are in the interest of the country. I think it can be a very, very good way of augmenting resources. In terms of, I think in terms of ease of doing business, and as Devin was saying, that trusting the taxpayers, there are some very clear initiatives. The reduction in the period of dispute, reduction in the period of returns that can be opened from 6 years to 3 years is very, very significant. It's a really painful thing
for an ordinary taxpayer to just maintain all the records and data for 6 years was totally unrealistic. In terms of the creation of this one code by reconciling all multiple codes and putting it under one agency, I think is, again, if we can get that started, that's going to be a really powerful force in terms of doing things easily. There is a clear. तो उद्योग संगठन फिक्की के अध्यक्ष इस वक्त उदय शंकर आपको बता रहे थे कि जो फिस्कल डेफिसिट या फिर कहें जो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किया गया है उसका तहे दिल से स्वागत करते हुए और एक बड़ा सकारात्मक उन्होंने कहा कि जो भरोसा दिखाया है वित्त मंत्री ने करदाताओं पर और जो कहा है कि भाई ठीक है, अगर आपके जो मामले हैं पहले 10 साल पहले के मामले खोले जा सकते थे, अब केवल 3 साल तक ही वो सीमा रखी गई है, तो ये जो ईमानदार जो करदाता है उस पर जो भरोसा है वो एक काफी इंपॉर्टेंट है। श्यामा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे मुंबई से। श्यामा, स्वागत है आपका। और मुंबई में CII का एक चेहरा आपके साथ इस वक्त है, क्या कुछ बड़ा रिएक्शंस वहां से आ रहे हैं आपको? जी बिल्कुल, हमने बताया था कि ये लोग डिस्कशन कर रहे थे पोस्ट बजट के बाद में। विनीत मित्तल है हमारे साथ में, एनर्जी सेक्टर से जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले बताइए क्या रिएक्शन है आपका इनिशियल बजट की पूरी स्पीच सुनने के बाद? ये काफ़ी बैलेंस्ड होलिस्टिक बजट है। अगर आप देखेंगे तो जो भी सरकार बजट से पहले भी बातचीत कर रही थी और 3 मिनी बजट लाई थी, उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया है और बहुत ही सकारात्मक रूप में बजट को लेके आए हैं। इन्होंने जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स थी, जैसे भारतवर्ष में DFIs की बहुत शॉर्टेज हो गई थी जब से ICICI IDBI बैंक में कन्वर्ट हो गए थे, उसके लिए 20,000 करोड़ का फंड देके उसको वापस स्टार्ट करना। पावर सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी सबसे वीक लिंक था, तो उसके लिए रिफॉर्म्स को लेके आना। और पावर सेक्टर में सोलर कंपनीज को इन्वेस्ट करने के लिए इरिडा एक जो बहुत महत्वपूर्ण दायित्व निभाती है, उसमें फर्दर 1500 करोड़ इक्विटी देने से वो ज़्यादा लोन और दे पाएंगे। तो अगर आप एनर्जी क्षेत्र के हिसाब से देखें तो बहुत सारे पॉजिटिव स्टेप सरकार ले आई है जो इंडस्ट्री की पेंडिंग डिमांड थी। और ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर के माइंडसेट से देखें तो स्टेट्स को इनकरेज करना, उनको बजट में बेनिफिट्स देना टू इन्वेस्ट इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। रोड सेक्टर के लिए बहुत अच्छा बजट एलोकेशन किया गया है। एजुकेशन में के कैपेक्स के लिए बहुत अच्छा एलोकेशन किया गया है। और उसके साथ साथ प्राइवेट इक्विटी फंड्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, उनके लिए भी काफ़ी ईजिंग की गई है टैक्स रिफॉर्म्स के थ्रू। सो ओवरऑल अगर देखा जाए, अगर ये सारे चीज़ें अच्छे से टाइम बाउंड फैशन में इम्प्लीमेंट हो जाएं तो ये बजट रियल सेंस में ट्रांसफॉर्मेशनल बजट हो सकता है। श्यामा, चूंकि एनर्जी सेक्टर के आप कुछ पूछवाना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, एनर्जी सेक्टर के ये जो नुमाइंदे हैं उनसे आप ये पूछ सकते हैं कि अगले 5 सालों में जो ऊर्जा से क्षेत्र में 3 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाना है, ये तो वित्त मंत्री की तरफ से अब ये आ चुका है, क्या निजी क्षेत्र भी अब निवेश के लिए सामने आएगा? कितना पॉजिटिव है ये लोग एनर्जी सेक्टर को लेकर? सर, ये भी एक बात है कि ऊर्जा क्षेत्र में सोलर एनर्जी की बात कर लीजिए या ओवरऑल की बात कर लीजिए, 3 लाख करोड़ की अनाउंसमेंट की बात हुई है। कैसे प्राइवेट सेक्टर भी सामने आएगा इसमें योगदान देने के लिए? सबसे बड़ा चेंज किया है कि जो डिस्कॉम्स होती थी, हर डिस्ट्रिक्ट में एक ही डिस्कॉम होती थी जो यूजुअली सरकार के द्वारा ओन की जाती थी उनके द्वारा। अब कहा गया कि कंज्यूमर के पास चॉइस होगी और मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हर डिस्ट्रिक्ट में आएंगी। ये इसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी भी आएगी और प्लस कंज्यूमर के लिए इलेक्ट्रिसिटी में चॉइस करने की ऑप्शन हो जाएगी। अगर सपोजिंग मैं केवल सोलर, विंड और बैटरी के थ्रू पावर देता हूँ और ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्कॉम मैंने बनाई, तो कंज्यूमर चूज कर सकता है कि वो कन्वेंशनल पावर के थ्रू बिजली चाहता है कि क्लीन ग्रीन एनर्जी चाहता है। और इसके साथ और क्या होगा कि आज सबसे बड़ा चैलेंज है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कि हमारी बिजली की कॉस्ट क्रॉस सब्सिडी की वजह से सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पड़ती है। तो अगर ये रिफॉर्म आ गया तो जो क्रॉस सब्सिडी और ये सारी चीज़ें भी चेंज होंगी और अगर इसमें परिवर्तन आया तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत कॉम्पिटिटिव होगी और बहुत अच्छा जॉब क्रिएशन भी होगा। तो जी अजय, आपने सुना कि किस तरीके से इन्होंने ओवरऑल बजट पे भी बात की और नीच में जाके, डीप में भी जाके इन्होंने एनर्जी सेक्टर पर से पे भी बात की है।
बहुत बहुत धन्यवाद श्यामा। लेकिन आप अलग अलग सेक्टर्स के जो एक्सपर्ट्स हैं उस पर निगाह रखिएगा और जो बजट के स्पेसिफिक अनाउंसमेंट्स हैं उन पर उनके रिएक्शंस लेते रहिएगा। हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुंबई से जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इस खास चर्चा पर हम वापस लौटेंगे और बताएंगे कि वित्त मंत्री ने क्या कुछ बड़ी घोषणाएं की हैं आम बजट 2021-22 में। संभाल के रखना, कोई ले न जाए। हम जानते हैं कि बैंक में सिर्फ पैसे जमा नहीं होते, बैंक ऑफ इंडिया रिश्तों की जमा पूंजी। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। तो साल 2021-22 का बजट जो है वो आपके सामने है और बजट को लेकर जो प्रतिक्रिया आ रही है वो भी हम लगातार आपको बता रहे हैं। अब तक जो प्रतिक्रियाएं बहुत पॉजिटिव प्रतिक्रियाएं, सकारात्मक प्रतिक्रियाएं, जिस तरह का माहौल था उसको देखते हुए इस बजट को लेकर जो उम्मीदें थी उन उम्मीदों पर ये बजट खरा उतरता दिख रहा है और जो आशंकाएं थी उन आशंकाओं को निर्मूल साबित करता हुआ दिख रहा है। इस वक्त हम सीधा आपको जी राजनाथ सिंह इस वक्त ये नीति आयोग के अध्यक्ष हैं जी राजीव कुमार जी उनकी बात सुन लेते हैं। और ये साफ जाहिर किया है कि वो अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का उनका पूरा फोकस है और उससे ही हमारे रोजगार भी बढ़ेंगे, हमारी GDP भी तेजी से बढ़ेगी और जो हमारी इंक्लूजन की स्कीम्स हैं जैसे कि उज्ज्वला में अब 8 करोड़ तो हो गए, 1 करोड़ और बढ़ाने की बात है हाउस होल्ड को, उन सब पर भी हम अपना खर्चा ठीक से कर सकेंगे। सर फिस्कल डेफिसिट का टारगेट जो है जो 3.5% था वो बढ़ा के 9.5% कर दिया है। अगले साल के लिए भी 6.8% कर दिया गया है। तो सर फिस्कल डेफिसिट कहीं इन्फ्लेशन डेफिसिट में ना बन जाए, इस तरह का डर नहीं। देखिए पहली बात तो ये कि जो 3.5 से 9.5% हुआ उसमें किसी ने किया नहीं, वो तो होना था वो हो गया क्योंकि कोविड की वजह से। तो मतलब वो तो एक ऐसी चीज़ है जिसको कहते हैं कि फेथ अकम्पली, मतलब वो तो जो एक होना था मतलब हो गया है। मगर जो बड़ी बात है जो उन्होंने करी है जैसा कि आप कह रहे हैं कि अगले साल के लिए उन्होंने कहा है कि केंद्रीय सरकार का वित्तीय घाटा 6.8% होगा और मैं इसको एक बहुत बड़ा कदम मानता हूं क्योंकि अगर इसमें ये ना होता तो जैसा कि मैं कह रहा था कि हम एक वर्चुअस साइकिल नहीं बना पाते, हम एक ऐसी हम ग्रोथ की बात नहीं कर पाते और उसी को करने से ही उन्होंने जो है वो अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो 34% से बढ़ाया है जो कि अप्रत्याशित है। और अगर इसमें आप 2 लाख करोड़ और जोड़ें जो कि राज्यों को दिया जाएगा तो करीब 70% से कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया। यही ज़रूरत थी। इसको इंफ्रास्ट्रक्चर पे जैसा उन्होंने कहा है, हाईवेज पर, रेलवेज पर, पोर्ट्स पर, पावर पर उन्होंने जो खर्चा बढ़ाया है उससे ही हमारे देश में प्रगति होगी, रोजगार बढ़ेगा और हमारी समृद्धि बढ़ेगी। यहाँ तक ये जो डर है लोगों का कि इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो मैंने आज तक कोई बहुत अच्छा कोई इस तरह का कोई एनालिसिस नहीं देखी है जो कि ये दिखाए कि जो जब वित्तीय घाटा बढ़ता है तो उसके साथ में इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। ऐसा नहीं होता है। खासतौर से अगर आपका सप्लाई साइड मजबूत रहे और आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ठीक से आते रहें, उनकी सप्लाई बनी रहे, तो उसमें वित्तीय घाटे से बढ़ाने से ये बिल्कुल भी ऐसी कोई नेसेसरी इक्वेशन नहीं है कि अगर वो बढ़ गया तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन ब्याज दरों पे कोई प्रेशर होगा तो ब्याज दरें भी बढ़ सकती हैं। ब्याज दरें अब इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी है इस समय अर्थव्यवस्था में,
अगर आप डिपॉजिट्स की रेट ऑफ ग्रोथ देखें तो बेतहाशा है, बैंकों के पास बहुत पैसा है। इसीलिए आपने देखा होगा कि पिछले साल में भी जब सरकार ने अपना बोरोइंग बढ़ाई थी और शायद 12 लाख करोड़ उन्होंने कर दी थी, तभी भी बॉन्ड यील्ड्स बढ़ी नहीं। और मुझे नहीं लगता कि बॉन्ड यील्ड्स अभी भी बढ़ेंगी, क्योंकि लोगों के पास जो है वो सेविंग सारी उन्होंने और जो है वो बैंकों में करी है, और लिक्विडिटी होने की वजह से मुझे नहीं लगता कि ब्याज दरें बढ़ेंगी। सर, इस बजट में प्राइवेटाइजेशन पे भी बड़ा जोर दिया गया है, तो सरकारी बैंक जो है प्राइवेटाइज किए जाएंगे, जनरल इंश्योरेंस कंपनी प्राइवेटाइज की जाएगी। क्या आप देख रहे हैं कि सरकार का प्राइवेटाइजेशन जो डिसइन्वेस्टमेंट लक्ष्य है पहले जो हासिल नहीं हुआ था, हासिल हो जाएगा अपने साल में? नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है, बल्कि मैं कन्विंस्ड हूँ कि ये लक्ष्य हासिल होगा, क्योंकि इस बार कुछ नए कदम साथ में बताए गए हैं। पहली बार ये कहा गया है कि एसेट मोनेटाइजेशन की एक पाइपलाइन पहले से अनाउंस कर दी जाएगी और कर दी गई है, और उसके लिए एक डैशबोर्ड बनाया जाएगा। डैशबोर्ड का मतलब कि रियल टाइम डेटा उसमें आता रहेगा, और मतलब बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी बन जाएगी कि हर महीने आपको पता लगेगा क्या एसेट मोनेटाइजेशन हुआ या नहीं। नीति आयोग के अध्यक्ष राजीव कुमार जी थे और कह रहे थे कि एक तरह से ये बजट जो है ये विकास का और डेवलपमेंट का बजट है। और इस वक्त बजट पर एक बार फिर से हम नजर डालते हैं, इस बजट की जो मुख्य बिंदु हैं, जो हाइलाइट्स क्या हैं, आइए एक बार फिर से उस पर नजर डाल लें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया मौजूदा सरकार का तीसरा बजट। देश के विकास पर खर्च होंगे 34,83,000 करोड़ रुपए। वित्त मंत्री ने देश के सामने रखा आत्मनिर्भर भारत का विजन। 130 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बजट में स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, समावेशी विकास, इनोवेशन और अनुसंधान पर बड़ा फोकस। बजट का सबसे बड़ा फोकस स्वास्थ्य सेवाओं में आमूलचूल बदलाव पर। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत। स्वास्थ्य योजनाओं पर 137% ज्यादा 2,23,846 करोड़ रुपए। कोरोना की वैक्सीन पर खर्च होंगे 35,000 करोड़ रुपए। आत्मनिर्भर भारत के तहत रोजगार पैदा करने के लिए 13 चैंपियन सेक्टर में अगले 5 सालों में करीब 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी। टेक्सटाइल सेक्टर में नौकरियां देने के लिए बनेंगे मित्र योजना के तहत अगले 3 साल में 7 टेक्सटाइल पार्क। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत मिशन के तहत शहरों के काया पलट की तैयारी। शहरी स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण में अगले 6 साल में 1.41 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना। जन जीवन मिशन शहरी योजना में 5 सालों में 2.87 लाख करोड़ रुपए होंगे खर्च।